గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే ఈ సెషన్ కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ రాఘవన్ గారిని కూడా స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. సార్ వచ్చి జాయిన్ అవుతారు విత్ 2 minutesలో. సో సార్ మీరు చేసేస్తారా? సో మురళీధరరావు గారిని పేపర్ ప్రజెంట్ చేయాల్సిందిగా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని కోరుతున్నాను. मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रयेत्। कल्याणाद्भुतगात्राय कामिदार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नमस्सदसे सदसस्पतये च। अत्र इदानीं 3-दिवसीय राष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्याम् अस्यां द्वितीयसत्रस्य अवकाशः लब्धः। तत्र प्रातःकाले समयः नासीदिति कारणतः मम पत्रं प्रातःकाले आसीत्, अतः तत्र समयाभावात् इदानीं मम समयः आगतः। मध्ये मध्ये अस्माकं छात्राः सन्ति इति मत्वा संस्कृतेपि भवति, मध्ये मध्ये तेलुगु अध्यक्षाः सन्ति, तेलुगुभाषायां सन्ति, अतः तेलुगुभाषायां मध्ये मध्ये सूचयामि। अस्तु, अम्बेड्कर् महोदयानां विषये वक्तव्यम् इत्युक्ते अस्माकं बुद्धिः न पर्याप्ता भवति। तेषां प्रातःकाले अस्माभिः श्रुतं, बहुभिः बहुधा उक्तमस्ति। विशिष्य महान्तः विद्वांसः वेङ्कटेश्वर विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः ते उक्तवन्तः, तत्र श्रोतुमेव कथं अम्बेड्कर् महोदयानां वैदुष्यं कथमस्ति इति तेषां वाक्यं श्रुत्वा एव अवगतं भवति। तेषां पुत्री अपि प्रथमसत्रे सापि उक्तवती, अतीव रोमाञ्चकमासीत्, सम्यक् प्रतिपादनं कृतवती। तत्सर्वं दृष्ट्वा अहम् अम्बेड्कर् महोदयानां विषये 1% अपि अहं न जानामि इति अवगतं मम। तथा वैदुष्यं तेषां वैदुष्यम् अस्ति इति। अथापि मम सविधे एकः छात्रः डिसर्टेशन् सब्मिशन् कृतवान्, डाक्टर् अम्बेड्कर् महोदयानां शैक्षिकचिन्तनमिति। तत्र अहं किञ्चित् यदा डिसर्टेशन् समये अहमपि तत् पुस्तकम् अवलोकितवान्, काञ्चन विषयान् अहमपि गृहीतवान्। अम्बेड्कर् महोदयानां चिन्तनानि बहूनि चिन्तनानि बहुमुखी प्रज्ञाशाली ते आसन्। न केवलम् एकस्मिन् मार्गे तेषां चिन्तनमासीत्, बहुषु विषयेषु तेषां चिन्तनमासीत्। इत्युक्ते समाजस्य विकासः, शिक्षा कथं भवेत्, समाजे शिक्षा कथं भवेत्, सामाजिकजनानाम् उद्धारः कथं भवेत्, निर्धनिकानाम् उद्धारः कथं भवेत्, एवं देशस्य विकासः कथं भवेत् इति भिन्नभिन्नविषयाणां विषये तेषां चिन्तनमासीत्। तत्र अहम् एकम् अंशं स्वीकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्र भवति शिक्षाविषये अपि तेषां चिन्तनं स्पष्टमासीत्। एतादृशशिक्षा भवति चेत् समाजस्य विकासो भवति इति तेषां चिन्तनमासीत्। तस्मिन् विषये मया यत् पठितं यत् ज्ञातं तद् वक्तुम् इच्छामि। तत्र अस्माकं प्राचीनभारतादारभ्य अद्य यावत् विशिष्य शास्त्रेषु भवतु, काव्येषु भवतु, नाटकेषु भवतु, सर्वत्र सर्वैरपि उक्तमस्ति शिक्षा भवेत्, शिक्षिताः भवेत् इति। అంటే మన ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా
చెప్పిన వారు వంటి సంస్కృతంలో చెప్పినటువంటి కవులు కానీ తెలుగులో చెప్పినటువంటి కవులు కానీ ఏం చెప్పారంటే ప్రతి ఒక్కడు బాగా చదువుకొని ఉండాలి, చదవడం వలనే వాని యొక్క అజ్ఞానం అనేటువంటి తొలగి దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది మన ప్రాచీన కాలంలో వచ్చినటువంటి సంప్రదాయం. అంటే కవులు కానీ కావ్యాల్లో కానీ ఇలాంటి విషయాలు ఎక్కువగా ప్రతిపాదించారు. ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనం నీతికారై ఉక్తమస్తి బహుషు శ్లోకేషు తత్ర జనాన్ జాగరితాః సంజాతాః. తత్ర విద్యా దదాతి వినయం వినయాద్ యాతి పాత్రత్వాదనమాప్నోతి ధనాద్ధర్మ తతస్సుఖం ఇత్యాది శ్లోకైః. న చౌరహార్యం న చ రాజభాజం న భ్రాతృభాజ్యం న చ భారకారి వ్యయే కృతే వర్ధత ఏవ నిత్యం విద్యాధనం సర్వధన ప్రధానం. ప్రొఫెసర్ రాఘవన్ గారిని కూడా కన్వీనర్, సెషన్ కన్వీనర్ సార్ని పైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ఇది విద్యాయాః వైశిష్ట్యం బహుషు గ్రంథేషు ప్రతిపాదితమస్తి. ఏవమేవ తత్ర భగవద్గీతాయాం అర్జునः ఏవం వదతి యదా అహం యుద్ధం న కరోమి ఇది యదా ఉపవిశతి తదా కృష్ణः వదతి నపుంసకవత్ తథా ఉపవిష్టవాన్ అస్తి ఖలు తథా న భవేత్ యుద్ధం కరోతు ఇది ఉక్తవాన్. నపుంసకవత్ యదా నపుంసకవత్ ఇది పదప్రయోగం కృతవాన్ తదానీం తస్య రోషः భవేత్ ఇది మత్వా తాదృశ పదప్రయోగः అనేన కృతः. తద్వత్ భారత సమాజేపి నీతికారాः ఏతాదృశ వాక్యాన్ని ప్రయోగం కుర్వంతి. శునఃపుచ్చమివ వ్యర్థం జీవనం విద్యయా వినా నగుహ్య గోపనే శక్తం నచ దంశ నివారణే ఇది. యది విద్యావాన్ న భవతి సహ శునఃపుచ్చవతు భవతి తేన ప్రయోజనమేవ నాస్తి లోకే. అతః సర్వేపి విద్యావంతः భవేయుः ఇది తేషాం ఆశయः. ఏవమేవ అంబేద్కర్ మహోదయాः अपि సర్వేపి సుశిక్షితాः భవేయుः ఇది చింతనం తేషాం చింతనమాसीत्. కిమర్థం తథా తేషాం చింతనమాसीत् ఇత్యుక్తే అస్మాకం సంస్కృతవాङ्మये ఉక్తమస్తి విద్వానేవ విజానాతి విద్వజ్జన పరిశ్రమం నహి వంద్యా విజానాతి గుర్వీం ప్రసవవేదనాం ఇది. యః విద్వాన్ భవతి విద్యాయాः మహత్వం యः జానాతి స ఏవ అన్యేషాం కృతే వక్తుం శక్నోతి. అంబేద్కర్ మహోదయాः महान् विद्वांसः बहुषु विषयेषु निष्णाताः बहुषु विषयेषु निष्णाताः कृतभूरि परिश्रमाः सर्वेषु विषयेषु. अतः शिक्षायाः महत्वं ते सम्यक् जानन्ति इति मत्वा सर्वान् प्रचोदयन्ति स्म अंबेडकर् महोदयः. अतः विद्यायाः विषये तथा प्रतिपादनं तैः कृतमस्ति, शिक्षायाः महत्वं तैः प्रतिपादनमस्ति इति. अतः सर्वैः भारतीयैः उत्तमशिक्षावन्ताः भवेयुः इति तेषाम् आशयः. तत्र तेषां जीवनं वयं परिशीलयामश्चेत् तत्र प्रातःकाले बहुभिः उक्तमस्ति, अतः तस्मिन् विषये समग्रं नाहं कथयामि. सामान्यग्रामीणे ग्रामे जन्म तेषां जन्म अभवत्. तत्र निर्धनकुटुम्बे स्थित्वा तदनन्तरं तेषां मातापितॄणां प्रेरणया सः सम्यक् अध्ययनं कृतवान्. देशस्य चरित्रमपि सः बाल्यादेव सर्वं पश्यन्तः आसन् इति कारणतः भारतदेशस्य दुस्थितिमपि ज्ञात्वा एतत् सर्वं कारणं भवति शिक्षायाः मूलम् इति तेषाम् आशयः आसीत्. अतः इमे महोदयाः सम्यक् अध्ययनं कृत्वा तत्र सर्वानपि प्रचोदयितुं प्रेरयितुं ते उद्युक्ताः सन्ति. सामान्यकुटुम्बे स्थित्वा सः देशस्य स्वतन्त्रभारतस्य संविधाननिर्माणे शिल्पी सन् सः अभिनव मनुः इति नाम तेन प्राप्तमस्ति. अभिनव मनुः इति नाम तस्य यशः प्राप्तमस्ति अनेन इति.
तस्य जीवनदर्शनं फिलासफी आफ् लैफ् इत्यस्मिन् विषये वयं चिन्तयामश्चेत् तत्र तेषां चिन्तनमासीत् सर्वेषां भारतीयानां न केवलम् अधस्तनवर्गीयाणाम् अपि तस्मिन् विषये बहु आग्रहः आसीत्। विशिष्य भारतीयानां कृते शिक्षा भवेत्, सर्वेपि पूर्णतया अखण्डचेतनाः भवेयुः, सम्पूर्णज्ञानवन्तः भवेयुः इति तेषाम् आशयः आसीत्। वर्गविहीन समाजस्य निर्माणं तेषाम् अभिलाषः आसीत्। प्रातःकाले सर्वैरपि उक्तमस्ति वर्गविहीन जातिः अस्माकं भारतदेशे भवेत् इति। तस्य मूलकारणं भवति देशस्य न्यूनतायाः मूलकारणं भवति वर्गजातिः इति। अतः तत् निर्मूलनम् आदौ भवेत्। तद् भवति चेत् समैक्यरूपेण यदि तिष्ठामः तर्हि देशस्य विकासो भवति इति तेषाम् आशयः। अतः जीवनदर्शनमपि तेषां फिलासफी आफ् लैफ् मध्येपि एतादृशचिन्तनं तेषाम् आसीत्। संविधानलेखनानन्तरम् अनेन महोदयेन एकं वाक्यं तत्र उक्तमस्ति, आङ्ग्लभाषायां तेषां तद्वाक्यमस्ति। किमित्युक्ते सर्वेपि उन्नताः भवेयुः इति। सर्वेपि सुशिक्षिताः भवेयुः, सर्वेपि उन्नताः भवेयुः, न कोऽपि निर्धनिकाः भवेत्, न कोऽपि सामान्यजनाः भवेयुः तेषां चिन्तनम्। अत एव तत्र उक्तमस्ति इफ् ऐ फैण्ड् दि कान्स्टिट्यूशन् बीइङ्ग् मिस्यूस्ड् ऐ शेल् बि किमस्ति ऐ शेल् बि टु बर्न् दि फस्ट् इति। आदौ अहमेव यदि कान्स्टिट्यूशन् यदा मया लिखितमस्ति तस्मिन् संविधाने यदि दोषाः सन्ति चेत् अन्येषां कृते यदि हानिर्भवति तर्हि आदौ अहं तस्य नाशं करोमि इति अम्बेड्कर् महोदयेन उक्तमस्ति। इत्युक्ते संविधानं न केवलम् एकस्य वर्गस्य कृते न निर्मितम् अपि तु समग्र भारतस्य कृते तेन निर्मितमस्ति। समग्र भारतं सर्वेषां देशानां कृते अग्रगामी भवेत्। समग्र भारतं सर्वेषां कृते गुरुभूतं भवेत्, मार्गदर्शकः देशः भवेत् इति तेषाम् आशयः आसीत् इति अनेन अस्माभिः ज्ञायते। एवम् अन्यदपि अस्ति, स तु प्रातःकाले त्रिपाठी महोदयेन उक्तमस्ति प्रधानतया जनाः एवं भवेयुः इति। बी एजुकेटेड, बी ऑर्गनाइज्ड, बी कॉन्फिडेंट, नेवर गिव अप इति एते पंच विषयाः मनसि निधाय कार्यं कुरु, तथा भवेयुः। एते पंच विषयाः तत्र संस्थाप्य तस्य जनाः अग्रे गच्छेयुः इति तेषाम् आशयः आसीत्। एवं बहवः विषयाः लिखिताः, एते महोदयाः 2 मिनिट्स् मध्ये समापयन्तु इति कथयन्तः सन्ति। तेषां शिक्षायाः उद्देश्यम् इदमपि आसीत्। बालकः यदा समये वयसि गच्छति, गते काले सः स्वयमेव सम्पादयेयुः, स्वयमेव जीवनं कुर्युः, स्वयमेव सामर्थ्यं सम्पादयेयुः। तथा अन्येषां सविधे देहि इति प्रार्थना न कुर्यात् इति तेषाम् आशयः। तदर्थं शिक्षायाः उद्देश्यं भवेदिति। बालकः स्वकीयव्यवहारे स्वसंस्कृत्या च भारतीयसंस्कृत्या सह जीवनं भवेदिति। सर्वाङ्गीण विकासः भवेत्, व्यक्तित्वस्य विकासो, सर्वेषु जनेषु व्यक्तित्वविकासो भवेत्। बालकः स्वचरित्रनिर्माणे सशक्ताः भवेयुः। उन्नतस्थाने सर्वेपि जनाः उन्नतमूल्यैः सह उन्नतस्थाने भवेयुः इति तेषाम् आशयः आसीत्। एवमेव शिक्षकाणां स्थानविषयेपि अम्बेड्कर् महोदयेन उक्तमस्ति, शिक्षकः छात्राणां ज्ञानं न वर्धयति, अपि तु शिक्षकः किं करोति, छात्रे विद्यमान शक्तिं प्रेरयति तावदेव। अतः तादृशः शिक्षकः भवेत्। अहं बोधयामि, अहं तस्य छात्रस्य कृते ज्ञानं प्रबोधयामि इति तथा न भवेत्। छात्रस्य कृते ज्ञानमस्ति, तद् ज्ञानं स्वकीयशक्त्या तस्य प्रेरयेयुः इति अम्बेड्कर् महोदयानां चिन्तनमासीत्। तत्र शास्त्रेपि उक्तं ज्ञानाधिकरणमात्मा इति तथा वाक्यमस्ति। ज्ञानं
तस्य आत्मनि भवति, तस्य ज्ञानम् आत्मनि भवति। तत् ज्ञानं कथं विकसितो भवति इत्युक्ते सुखाद्युपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं मनः इन्द्रियसंयोगेन आत्मनि विद्यमानज्ञानं विकसितो भवति। तावदेव अम्बेड्कर् महोदयेन अपि तथैव उक्तमस्ति, अध्यापकः तथा ज्ञानं न ददाति, ज्ञानम् अस्ति तद् ज्ञानं प्रेरयति अध्यापकः, तादृश अध्यापकाः अपेक्षन्ते इति बहवः विषयाः तत्र उल्लेखः कृताः। अतः एतादृशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः आचार्येभ्यः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि विस्तरामि। धन्यवादाः मुरलीधरराव महोदयः। यतोहि समयपरिपालनं कर्तव्यमिति कन्वीनर् अहमेव भवामि। वस्तुतः अहं विलम्बेन आगतवान्, सर्वेषां कृते क्षमां याचे। तत्र VC महोदयेन सविधे आसम्, अतः क्षम्यताम्। Pleasant afternoon to my learned colleague, Professor Raghavan Garu, and all the paper presenters, faculty members, student friends, ladies and gentlemen. So as the most difficult task in any seminar is the person who is sitting here. Very, very difficult, because it's very easy to sit there and very difficult to sit here and manage all the things. And sorry for any interruption. Let me be very clear before this. See, there are 7 presentations. So we will give 10 minutes time for each presentation, friends. Make it brief. Let me just tell you only one example and sit down. When the NAC visit came recently, last month, I have to make 2 presentations, one for as a director of students welfare, one as a HOD. And before the committee came, everyone was taking, you will be given 15 minutes, you will be given 20 minutes, no problem, you put this many slides, that many slides, all the things was going on. But at the last but one day, it was told to us, no chance. Sometimes it may be only 5 minutes. So it may be only 5 minutes for you, just 5 minutes. Sometimes maybe 2 minutes. To tell about your department for 5 years in 2 minutes is going to be a bit difficult task, but yet you have to be ready, because you cannot question the NAC committee. Once they came to my department, to be very honest, it was not presentation, it was just a discussion. It went only for 7 minutes. And they were very happy. This is the problem again when you have a mobile. And the people will be calling all the time. So the next one was the Directorate of Students' Welfare Culture. It's only 5 minutes. I had to wind up, because I cannot say that I'll take 10 minutes or 15 minutes. Just telling you that, but this is how these seminars will make youngsters especially to have the time management, micro level and macro level presentation. If you're asked to give for 15-20 minutes, no problem, sir can definitely give. But to make it very brief, not only for him, for anyone is very difficult. That's why once again requesting on behalf of our co-convener, Professor Raghavan Garu and others, please make it between 7 to 10 minutes. And before I talk, both of us talk, we'll have a discussion also, because that's very, very important. You can ask a question to that particular paper presenter. He or she will answer it. That should be the main purpose of a seminar, just not we coming and talking and going away. Anyone can do it. Okay, thank you. Om Namo Venkateshaya. Thank you, sir. Actually, we invited you as a chairman for the session, and my colleagues are very eager to know who is the chairman. So I want to give some explanation for them. Please permit me, sir. But I will complete within 5 minutes, sir. Sir is actually I know very, very well for 10 years or more than 10 years. And Professor B.V. Muralidhar Garu, 1964, MA, MPhil, PhD in SV University. He studied and he is working also. Professor, Department of Political Science and Public Administration.
and he was director DSWCA, Director of Students Welfare and Cultural Affairs in 2008, and principal also SVU COA, and subject expert in international relations and foreign policy. So that is our SAR's subject expertism in that, and he joined as a assistant professor in 1989 in Sri Venkateswara University, having national and international seminars. He has participated in the 22 international seminars and national 54. Anantaram tatra actually like Ambedkar, I saw his profile without SAR's permission in Google, actually, to be frank. Actually, Ambedkar, I think, for to write the constitution, even 164 countries, he went and grasped the matter. But our sir went 22 countries: South Korea, Malaysia, Netherlands, Belgium, Germany, Sweden, Norway, Denmark, UK, USA, Hong Kong, Thailand, Nepal, Vietnam, Czech Republic, and academic assignments. Like Ambedkar, our sir also a junior Ambedkar, I think. Really. Why I am saying means non-controversial and very easy to talk with him, and even for students also, he was as a students welfare dean also. Many students I inquired, for they said sir is very what we can say, daya, like that only, made cursi like that only, and editor the International Peace and Development Studies, reviewer International Journal of Social Sciences and Humanities Singapore, article editor for publications, 11 intercollegiate youth festivals. Sir is actually not a scholar but also a tennis player. That is the great thing. 11 intercollege youth festivals, where the 64 universities were participated in 2011, and tennis player 124 tournaments sir has played. In 124 tournaments on behalf of SVU, and SVU cricket selection board member also. And one thing, sir, sir is in professional bodies, membership is Indian American Studies Network, Indian American Association Studies, Indian Institute of Social Sciences, Indian Political Science Association, Malaysia American Association, and last, Indian Institute of Public Administration, where myself and sir is also a member in IIPA with Dr. Agarali Iswareddy's. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే, ఎవరో ఒకరిని అడిగాను, సారు దశావతారం అన్నారు ఒకరు అది కూడా చెప్పలేమన్నారు. నేనేం చేశానంటే శతావతారం పెడదాం అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఇట ఉపన్యాసములు కానీ, అదేవిధంగా ఇన్ని కంట్రీస్ తిరగడం కానీ, స్టూడెంట్స్తో చాలా చక్కగా ఉండడం కానీ, అసలు ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చెప్పండి కూడా అడిగాను సార్, సారీ, కానీ ఒక్కరు కూడా మీరు అడిగిందే తప్పు అన్నారు. కానీ అంత మంచి వ్యక్తి అంటే, ఇప్పుడు వచ్చిన వారు మనకు చైర్మన్షిప్లో వచ్చారు మురళీధర్ గారు అనేది, వారికి విద్యాపీఠం తరపున ఈ యొక్క అంబేద్కర్ దినము తరపున వారికి స్వాగతం తెలుపుతున్నాను. లేటుగా వచ్చిందని క్షమించండి. जैसा कि महोदय ने आदेश किया 5 से 7 मिनट के अंदर अपना वक्तव्य को प्रस्तुत रखने के लिए, यद्यपि यह दुस्साध्य है, हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग आम तौर पर देखते हैं कि किसी काव्य पर चर्चा हो सकती है, किन्हीं कवियों के कृतियों पर चर्चा होती है, किसी सामाजिक अंश पर चर्चा हो सकता है,
पर आज हम देखते हैं किसी व्यक्ति विशेष पर एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, पूरा 3 दिनों तक चलाने वाला एक कार्यशाला अर्थात सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितने विस्तृत रूप में इनके व्यक्तित्व फैला हुआ है, विस्तारित हुआ है। तो मैं प्रातः जैसे कुलपति जी ने कहा है कि अंबेडकर जी सिर्फ जनता, ममता, समता, इसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी जी है। तो यदि हम चाहते हैं कि जनता, ममता और समता, इन तीनों चीज़ों पर यदि जुड़े हुए हैं अंबेडकर जी, तो ये सिर्फ और सिर्फ साध्य है शिक्षा के माध्यम से। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर जी का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। उन्होंने किस तरह शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा का किस तरह से उन्होंने विकसित किया और उनके शिक्षा के प्रति उनकी किस तरह की भावनाएं थी। और ये भी कहते हैं किसी भी समाज को हम सुचारू रूप से विकसित करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, विकासशील देखना चाहते हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही साध्य है। ऐसा हम अंबेडकर जी के वचन को स्मरण कर सकते हैं। तो ये उच्च शिक्षित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी भारत के एक प्रमुख शैक्षिक विचारक रहे हैं और हैं भी। उनके शैक्षिक विचार आज भी प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान महत्वपूर्ण है। उनके व्यक्तित्व के कई पहलू ऐसे हैं, जैसे एक उच्च शिक्षित व्यक्ति रहे, प्रोफेसर के स्तर पर कार्यरत रहे और वे एक शिक्षाविद भी रहे हैं और एक अग्रणी वैश्विक विचारक आदि के रूप में उन्होंने अपना जीवन को भारतवर्ष के लिए समर्पण किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन में शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया और उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य समृद्ध हो सकता है। जैसे कि हमने इससे पहले भी कहा, किसी देश का विकास चाहते हैं, विकासशील गतिशील चाहते हैं, तो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही होता है। देश मतलब कुछ और नहीं, वहाँ के सामाजिक जन समुदाय को ही हम लेते हैं। तो किसी भी समाज का या देश का या राष्ट्र का विकास चाहें तो हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। आपका शैक्षणिक जीवन, अंबेडकर जी का शैक्षणिक जीवन भी बहुत भव्य और लोगों के लिए प्रेरक रहा है। शिक्षा के लिए उनकी बड़ी मेहनत, उनके द्वारा अर्जित की गई उच्चतम शैक्षणिक डिग्रियां और शिक्षा के बल पर अर्जित की गई उन्होंने जितनी भी ज्ञान संपदा को अर्जित किया है, उन्होंने शिक्षा के बलबूते किया और यह असामान्य और कुशाग्र बुद्धि यह आज भी सभी के लिए एक प्रेरणा बनता है। महाशय अंबेडकर महोदय ने पढ़ने का बहुत उनको शौक था। प्रतिदिन कहा जाता है कि उनको प्रतिदिन 18 घंटे अध्ययन कार्य में वो व्यस्त रहा करते थे। उनकी शैक्षिक योग्यता, विद्वत्ता और प्रतिभा इतनी व्यापक और शानदार रही है कि उन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ साथ ज्ञान के प्रतीक अर्थात सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर जी को भारत के अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के नाम का भी उपाधि दी गई है और महोदय अत्यधिक उच्च शिक्षित और अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों के जो राजनीतिक क्षेत्र में रहे उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं। द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन एट दैट टाइम। महोदय ने लंदन, भारत, अमेरिका के से शिक्षा प्राप्त की और कई उच्च डिग्रियां प्राप्त की। इस तरह से उनके शैक्षिकीय जो योग्यताएं थी उन्होंने अपने जीवन में कमाया और अपने खाते में रखा। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के बारे में उन्होंने एक कोट किया, हालांकि बहुत सारी बातें उन्होंने शिक्षा के लिए कही है। सबसे पहले इस बात को मैं रखना चाहता हूं आपके सामने, शिक्षा एक बाघिन का दूध है। शिक्षा एक बाघिन का दूध है और जो कोई भी इसे पिएगा वह बाघ की तरह घुर्राएगा। इस तरह से उन्होंने शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया और ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, मैं पत्र के बारे में वाचन नहीं करूँगा, सिर्फ हेडिंग्स में आपको बताना चाहता हूँ उन्होंने शिक्षा के लिए क्या योगदान दिया भारतवर्ष में। हम सभी जानते हैं और जैसे कि हम एक भाषा विश्वविद्यालय के रूप में हम यहाँ उपस्थित हैं, तो भाषा के जितने भी प्रावधान रहे संविधान में, जो भी प्रावधानों के माध्यम से आज हम अपना अस्तित्व को चला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी का देन है। इसको हमें भूलना नहीं है। चाहे वो भाषा हिंदी हो राजभाषा के दर्जे पर, चाहे वह भाषा संस्कृत हो, चाहे कोई और सांस्कृतिक भाषाएं जो भारतवर्ष में राजित हैं, तो उन सभी का
आकलन करना, एकत्रित कर एक जगह पे समेकन करके रखना, ये सिर्फ उन्हीं को श्रेय दिया जा सकता है। और वे बहुत ही शैक्षिकीय जागरूक व्यक्ति रहे। जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की उन्होंने, पिछड़े जाति के लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इससे हमें बखूबी प्रतीत होता है कि उन्होंने किस तरह से समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। और दलित शिक्षण संस्था की भी उन्होंने स्थापना की। 14 जून 1928 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलित शिक्षण संस्था की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दलितों की माध्यमिक शिक्षा को सुगम बनाना था। बाबा साहब ने मुंबई सरकार से माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी को पूरा करने में अक्षम दलित छात्रों के छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए इस संस्था की मदद करने की अपील की थी। इसलिए बम्बई गवर्नर ने 8 अक्टूबर 1928 को माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए 5 छात्रावास स्वीकृत किए। इसके अलावा गवर्नर ने हर महीने छात्रावासों पर व्यय के लिए भी 9,000 रुपये स्वीकृत किए गए थे। तो इस तरह से उन्होंने जहाँ जहाँ समाज में शिक्षा की ज़रूरत उन्होंने महसूस किया, किस समुदाय के लोगों के लिए महसूस किया और किस संप्रदाय के लोगों के लिए ज़रूरत महसूस किया, वहाँ पर उन्होंने अपना कर्तव्य को मानकर, उन्होंने उसका उत्तरदायित्व को लेकर वह पूरा किया उन्होंने। और इसी तरह पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना उन्होंने की, जो मध्यम वर्ग को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 जुलाई 1945 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और वो क्रमशः आज 30 से ज़्यादा कॉलेजेस बने, जिसमें से 1946 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, 1950 में औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज, 1953 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, 1956 में मुंबई में ही सिद्धार्थ लॉ कॉलेज। इस तरह से उन्होंने कॉलेज की स्थापना करते गए, जो आज वह संख्या बढ़कर 30 तक पहुंची है। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने शिक्षा के लिए योगदान दिया। उन्होंने सिर्फ 5 वाक्य उनका जो कोटेशंस है शिक्षा के बारे में, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और वाणी को विराम दूंगा। हमें शिक्षा के प्रसार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम राजनीतिक आंदोलन को महत्व देते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, मनमाड़ में 9 दिसंबर 1945 को उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित रहो, आत्मविश्वासी बनो, कभी भी हार मत मानो। यही हमारे जीवन के 5 सिद्धांत है। ऐसे ही उन्होंने नागपुर 29 जुलाई 1942 में उन्होंने कहा, किसी भी समाज का उत्थान उस समाज में शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनमाड़ में 16 जनवरी 1949 में ये बात कही। इसी तरह से ज्ञान सभी मनुष्य के लिए भोजन के समान है और शिक्षा ही जीवन में वास्तविक प्रगति की कुंजी है। असली शिक्षा हमें भयभीत करने की जगह तार्किक बनाती है। शिक्षा वह जो व्यक्ति को निडर बनाए, एकता का पाठ पढ़ाए, लोगों को अधिकारों के प्रति सचेत करे, संघर्ष की सीख दे और आज़ादी के लिए लड़ना सिखाए। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। समय आने पर भूखे रहो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस तरह से उन्होंने शिक्षा के लिए अपना योगदान दिया। और अंत में एक और वाक्य कहूँगा, शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी का वचन रहा। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को उसके अस्तित्व, क्षमता और सामर्थ्य से अवगत कराती है, ऐसे उन्होंने कहा। और इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के शैक्षणिक योगदान ने न केवल वंचित और शोषितों को बल्कि सभी समुदायों के छात्रों को, जन समुदायों को, लोगों को लाभान्वित किया। और इस तरह से उनका जो शैक्षिकीय योगदान रहा भारतवर्ष में, वो अतुल्य और किसी के समान हम तोल नहीं सकते, मोल नहीं सकते। इस तरह का एक कंट्रीब्यूशन उनका रहा शिक्षा क्षेत्र में। ऐसे कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और जिन्होंने इस मंच पर आकर अपना पत्र प्रस्तुत करने का जो मौका मुझे दिया, अध्यक्ष महोदय और कन्वीनर महोदय और संगोष्ठी के संचालक गण, सभी को मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। विराम। धन्यवाद।
जय भीम। उपस्थित समस्त विचारशील महानुभाव, प्रणाम आप सभी को। आप सभी जानते हैं देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विश्व रत्न से प्रसिद्ध है। एक अछूत या परिवार में जन्मे भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन डॉक्टर अंबेडकर अथक परिश्रम, अदम्य साहस का परिणाम है। अतः जनमानस में एक मिसाल बनकर उभरे। सामाजिक न्याय की स्थापना उन्होंने की। विशेष रूप से शिक्षा समाज परिवर्तन का एक शस्त्र है, औजार है, इस रूप में उन्होंने इसे समझा। केवल शिक्षा ही समाज को रूढ़ियों और जड़ता को मिटा सकता है। आप जानते हैं जिस समय में डॉक्टर अंबेडकर जी थे उस समय एक विशिष्ट वर्ग ही संस्कृत, संगीत और नृत्य में तल्लीन था। भारत में कुछ ऐसा भी समाज था जो वंचित रहा, बहिष्कृत रहा। लिहाजा उन्होंने ऐसे पीड़ित, दमित वर्ग को वाणी देने की दिशा में मुकनायक को प्रस्तुत किया वर्तमान के रूप में 31 जनवरी 1920। वो चाहते थे कि सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा मुहैया की जाए, ऐसी समानता की व्यवस्था हो। शिक्षा रूपी रोशनी मात्र कुछ लोगों तक ही सीमित ना रहे, ये आशय था समानता का। विशेष रूप से जिस प्रकार होता या अग्निहोत्र को अग्निहोत्र करने का अधिकार था, तो उस जमाने में भी शिक्षा ग्रहण करते समय लड़के ही आगे आ रहे थे, परंतु महिला वर्ग शिक्षा से वंचित थी। इसलिए वो चाहते थे कि लड़कों के साथ लड़कियां भी सीखें। और उसी के साथ महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है। भारतीय स्त्रियों को धार्मिक और सामाजिक आडंबरों से दूर स्त्री शिक्षा ही कर सकती है, ऐसा उनका मानना था। विशेष रूप से स्त्री ही घर को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। आप बच्चों को खूब पढ़ाइए, देश के शासक बनाइए, साथ साथ चरित्रवान भी हो, आत्मनिर्भरता उनमें आए। खासकर स्त्री अधिकारिता से जुड़े हिंदू कोड बिल का निर्माण उन्होंने किया, जिससे स्त्री मुक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सकारात्मक उपयोग पर बल दिया है और नैतिकता पर भी। समय के प्रति काफ़ी पाबंद थे डॉक्टर अंबेडकर जी और अध्ययनशील भी। आजकल विद्यार्थी काफ़ी एक्सक्यूज़ या वजह देते हैं कि आज हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पर आप कल्पना कीजिए उस दौर में जहाँ पर उपेक्षित समाज है और विपरीत हालात है, ऐसे पलों में भी अपने आप को प्रस्तावित करना, उसका सामना करना, सत्ता के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना आम बात नहीं है। कहते हैं कि आवाज़ उठाओ ताकि सुने वो कान जो अपनी तारीफ सुनने के आदी हो गए हैं, जिससे सोचे वो लोग जो खुद अपने अधिकारों से बेखबर सो गए हैं, जिससे कि खामोशी कहीं हमारी मजबूरी न बन जाए। आवाज़ उठाओ ताकि हम कभी आवाज़ उठाना ना भूल जाए। इस दिशा में उन्होंने बहिष्कृत भारत को भी प्रकाशित किया। वो चाहते थे कि जो धर्म के आड़ में कर्मकांड प्रस्तावित किया जा रहा है, एक ऐसी रूढ़ी परंपरा जो लोगों को पतन की राह पर अग्रसर कर रही है, तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो भारत को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त कर सके। इस दिशा में शिक्षक या अध्यापक कैसे हो, इसकी दिशा निर्देश वो देते हैं। शिक्षक या अध्यापक शीलवान हो, जो जीव हत्या ना करे। जैसे आप जैन दर्शन में अहिंसा का तत्व देखते हैं, केवल पशु हत्या नहीं, मानसिक रूप से भी किसी को प्रताड़ित या द्वेष जैसी भावना नहीं रखना। शिक्षक चोरी, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना करे। अध्यापक व्यभिचार या बलात्कार जैसे दुष्कर्मों से दूर रहे। शिक्षक को सर्वदा सत्य का अनुशीलन करना चाहिए। शिक्षक सदैव शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसे पदार्थ से दूर रहे। प्रज्ञावान हो, अप्पो दीपो भव, इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी। स्वयं प्रकाशित हो, अर्थात उनका व्यक्तित्व ही वैसा है। शिक्षक में करुणा और दया का भाव हो, ताकि जो कमज़ोर छात्र है, जो पीड़ित है, जो दमित है, उसकी संवेदना को आप समझ सके।
जैसे कि इम्फती या समान अनुभूति का गुण है। शिक्षक का परिश्रमी होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात अध्ययन करे और छात्र को भी परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि शिक्षक का प्रतिबिंब ही विद्यार्थी होते हैं। इस दिशा में वो आगे कहते हैं विद्यार्थियों के संदर्भ में भी कि समाज की प्रगति उस समाज के बुद्धिमान, कर्मठ, उत्साही विद्यार्थी पर निर्भर करती है। पर आज विद्यार्थियों में वो स्व अनुशासन नहीं रहा, ना ही वो समय का मूल्य। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो अपना समग्र जीवन अर्पित करते हैं मानव के हितार्थ, केवल दलितों तक वो सीमित नहीं रहे, समग्र मनुष्य जाति के लिए उनका योगदान रहा। उनके विचारों पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। मैं स्वयं दीक्षा भूमि से हूँ, नागपुर, जो एक वैचारिक मंथन हुआ उनका, जहाँ पर उन्होंने समग्र भारत दर्शन का अनुशीलन किया और जिसमें स्वातंत्र, समता और बंधुत्व की शिक्षा मिली। उस बौद्ध धर्म में मूल रूप से महामंगल सूत्र में 35 नैतिक कर्म का निर्देश दिया है, जैसे मूर्खों की संगति ना करना, बुद्धिमानों की संगति करना, पूज्यों की पूजा करना, जैसे कि आज जिसमें योग्यता ना हो उसकी भी चापलूसी की जाती है, इसका निषेध किया है इसमें। अनुकूल स्थानों पर निवास करना, पूर्व जन्म के संचित पुण्य का होना, अपने को सत्मार्ग के लिए प्रेरित करना, बहुश्रुत होना, शिल्प सीखना, शिष्ट होना, विनम्र होना, सुशिक्षित होना, मीठा बोलना, माता पिता की सेवा करना, स्त्री पुत्री का पालन पोषण करना, इस प्रकार के निर्देश है। डॉक्टर अंबेडकर ने विशेष रूप से स्वार्थी दलितों पर भी एक व्यंग कसा है। वो लिखते हैं कि मैं जो कुछ भी प्राप्त कर सका उससे कुछ पढ़े लिखे लोग ही मजे ले रहे हैं। अर्थात यहाँ पर देखा जाता है कि जहाँ कोई एक विशेष पद पर आसीन होते हैं तो अपने जो पिछड़े समाज है उन्हें वो भूल जाते हैं, जो वंचित रहे, तो उनका उद्धार, उनका विकास हो, इस दिशा में भी अपना दायित्व, कमिटमेंट जिससे आप कहते हैं प्रतिबद्धता, वो संवेदना वो देना चाहते हैं। संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि उनके मन में दलित भाइयों के प्रति भी विशेष रूप से एक सहानुभूति थी, क्योंकि समान अधिकार, उन्हें पानी पीने का तक अधिकार नहीं मिला, जिसे आप मौलिक अधिकार कहते हैं, अर्थात शिक्षा से वंचित रहे बच्चे। तो ज़रूरी ये है कि आज का अध्यापक निष्पक्ष हो, जातीयवाद, प्रांतीयवाद, क्षेत्रीयवाद जिससे हम प्रभावित रहे, और ये बात सच है, ताउम्र आजीवन ये बरकरार रहेगा भारत में। तो वो आपकी प्रतिभा है, आपकी योग्यता है, जो आपके इससे बियॉन्ड जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया, जैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय भी सिंबल ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान के प्रतीक के रूप में संबोधित करता है, विश्व रत्न। तो वो आपकी प्रतिभा है। हम में से किसी को एक मौका मिला तो हमने भारतीय संविधान लिख डाला, ये प्रतिभा है आपकी, ये योग्यता है, कम से कम अपनी योग्यता की कद्र कीजिए, और उसकी मिसाल है डॉक्टर अंबेडकर जी। शुक्रिया आप सबका। Good afternoon to all. Myself, Dr. Radhan Naik. My title is Comprehensive Study on Dr. B.R. Ambedkar, Contribution on Women Empowerment in India. Dr. Bhimrao Ambedkar was born on April 14, 1891 in the tiny Madhya Pradesh village of Mau, not far from the city of Indore. When the time came, the state was a component of central province, the 14th and final child of his parents. He was born. His father, Rajiv Moloji Sakfal, was an officer in the military who attained the rank of Subedar. Bhimabai Sakfal was his mother's name.
His family was from the advanced Maharashtra town of Ambedkar in the Ratnagiri region and was of Marathi descent. Ambedkar was brought to a low-class Maharashtrian where he encountered racial prejudice and financial inequality. His father likewise served in the British Indian Army in the Mau cantonment, and his forefathers had long before worked for the British East India Company's military. According to rumors, Ambedkar friends and he were not given enough attention in the classroom when they were attending school. They would feel alone, and teachers would not show such much care of assistants. Few individuals actually think they were not allowed to sit in the classroom. They were not allowed to touch either the water or the vessel that held it. So when they intended to drink water, someone of higher size and to pour it for them. Usually young people were the target audience for these events. Ambedkar was not just the creator of the Indian Constitution, he was also a renowned independence fighter, political figure, thinker, economist, editor, social reformer, and Buddhist revivalist. Ambedkar was also the first Indian to remove obstacle reformers and Buddhist revivalists. Ambedkar was also the first Indian to remove obstacles that prevented women from advancing in India. By codifying the common civil code for Hindus and other groups within Indian society, he laid the groundwork for genuine and tangible initiatives. He argued that women's socio-cultural rights, well-being and overall development should be prioritized over social education. He highlighted that all Indian women should receive their fair share and that women's dignity and modesty must be upheld and protected. And Dr. B.R. Ambedkar's contribution to empowerment of Indian women, Ambedkar's views on women's oppression, social democracy, caste, and Hindu social rituals and philosophy are important to contemporary Indian feminist thinking. Ambedkar shared the demands made by feminists throughout the world, emphasizing that women should have the same rights as men, including the right to education, to be treated equally, to own property, and to participate in politics. The legal subordination of one sex to the other, as J.S. Mill stated in the Subjection of Women, is wrong in and of itself and one of the major obstacles to human development. Ambedkar also has similar views on the issue of women employment. Ambedkar was a strong supporter of women and their contribution to societal change. Together with their male counterpart, 300 women participated in the historic Mahad Satyagraha. Every woman who marries should support her husband, assert her husband's status as an equal and friend, and refuse to submit to him. I have no doubt that if you heed my counsel, you will elevate yourself to honor and glory. Dr. Ambedkar tried an adequate inclusion of women's right in the political vocabulary and Constitution of Indian, that is, Article 14, equal rights and opportunities in political, economic, and social space. Article 15 prohibits discrimination on the ground of sex. Article 15, Clause 3 enables affirmative discrimination in favor of women. Article 39, equal means of livelihood and equal pay for equal work. Article 42, human conditions of work and maternity relief. Article 51, Clause A and C, fundamental duties to renounce practices derogatory to the dignity of women. Article 46, the state to promote with special care the educational and economic interests of weaker section of people and to protect
them from social injustice and all from exploitation. Article 47, the state to raise the level of nutrition and standard of living of its people and the improvement of public health and so on. Article 243, Class 3, 243T, Class 3 and 243R, Class 4 provides for allocation of seats in the Panchayati Raj system. Conclusion, Prime Minister Jawaharlal Nehru stated in his condolence address following Dr. Baba Saheb Ambedkar death in Parliament that Dr. Baba Saheb Ambedkar was a symbol of revolution against all repressive elements of Hindu society. His ideas are crucial for the social reconstruction that supports women empowerment, since his vision of a society founded on gender equality has not yet come to pass. Finally, it might be claimed that Dr. B.R. Ambedkar opened the way for social justice for all women, regardless of their gender, caste, or other characteristics. He created education for the advancement of women via his idea and convictions. He deserves everyone gratitude for all the amazing things he has done to advance society in the current situation. Ambedkar and his ideas about an egalitarian society have not yet been acknowledged for their contributions to changing Indian society and improving the lives of women. Thank you to all. Thank you to once again. Thank you. Namaskar. Good afternoon, everyone. Greetings to everyone, respected President Sir, Convener, and all the participants in the attendance. So, I'd like to express my thanks to the event organizer for conducting this seminar on Ambedkar's ideology and also giving me this opportunity to present a paper which is titled as Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar's Contribution to Nation Building, an insight of his inventiveness of national integration. Well, as we know that Dr. B.R. Ambedkar, he was the father of drafting committee, and for the Constitutional Assembly, it took 2 years, 11 months, and I believe 18 days to complete the Constitution. And as Sir said that, I need to complete this in 10 minutes. I don't think so I would be able to do justice, right, to brief his work in just 10 minutes. However, nevertheless, I'll try my level best to complete the same within a given time. So, Dr. B.R. Ambedkar played a crucial role in the making of modern India, especially in the realm of social justice, equality, and democracy. Dr. Baba Saheb Ambedkar was a prolific writer, a visionary leader, and a staunch advocate of human rights and dignity. He strongly believed that the foundation of a strong and vibrant nation lies in the unity and the integrity of the people. Dr. Baba Saheb Ambedkar was outspoken about his ideas of nation building. He possessed great foresight, and his warning about the future of India rings so true today. In a speech before the Constitutional Assembly, he cautioned his fellow legislators against the use of non-constitutional method of the protest, such as civil disobedience and satyagraha, because they were essentially anarchy in nature. He railed against the Indian tendency to engage in worship. He was the founder of Employment Exchange in our country. He played a vital role in establishment of National Power Grid System, Central Water Integration, Navigation Commission, Damodar Valley Project, Hirakund Project, and Swan Project. Now, if I talk about his nation building contribution, it was Dr. Ambedkar wanted self-representation for the ex-untouchable Dalits in the government cabinet bureaucracy, etc. Dr. Ambedkar opened in his written statement given to the Southwark Committee on Franchise in 1999, Dr. Ambedkar argued that
as the government is the most important field of the exercise of the individual capacity, it is in the interest of the people that no person as such should be denied the opportunity of actively participating in the process of the government. That is to stay popular government is not only government for the people but by the people. To express the same in a different way, representation of opinion by itself is not sufficient to constitute popular government. He also contributed in the inclusion of Dalits and backward in the different institutions of governance. Dr. Ambedkar went on to support the representation of Dalits, non-Brahmins, including Muslims, in the administration by nomination rather than the competition. He did so because he knew that some administration appears to be nothing more than the process of applying law as enacted by the legislature. However, according to the Ambedkar, administration is in modern times involves far more than the scrutiny of status for the sake of knowing the regulation of the state. He also helps in the right of the Hindu women. Apart from securing the right for the Dalit, other backward class, and the Muslim in the process of nation, Dr. Ambedkar emphasized to secure a dignified life and equal status for Hindu women also. He wanted to establish at least 7 laws for empowering Indian women. These were right of inheritance and succession, law related to dowry, maintenance, polygamy, civil marriage, divorce, last but not the least, laws for making wife's consent compulsory in adoption. Now, if I talk about the future of Indian nation, Dr. Ambedkar, he has given certain principles. The first one, to adherence to the constitutional means. Dr. Ambedkar said that if we wish to maintain democracy, not merely in the form, but also in the fact, the first thing we must do is to hold the fast to constitutional method of achieving our social and economic objective. It means that we must abandon the bloody method of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, abandon non-cooperation and satyagraha. When there was no way left for the constitutional method for achieving economic and social objective, there was a great deal of justification for unconstitutional method. But where constitutional methods are open, there can be no justification for this unconstitutional method. These methods are nothing but anarchy, and the sooner they abandon for the better of us. Now, I like to come to the conclusion part. Dr. Ambedkar argued that India is not a nation, but a nation in the making. It was not a nation because India was divided into thousands of castes and lacked fraternity between Muslim and Hindus. India was not a nation also because Indians have a denied right to ex-untouchables, backward castes and their women. Baba Sahib highlighted an alternative path of nation building. Accordingly, Baba Sahib pleaded to the Indian ruling elite that a nation cannot be built without establishing the right of every section of the society which comprise it, especially right to the erstwhile excluded group. In this regard, he called for the self-representative for Dalits, other backward class, minorities, and women. Along with Dr. Ambedkar also prescribed a 5-fold path to keep the future of our nation safe. That is, self-interception by Indians, understanding to constitution means denunciation of hero worship in politics. So before I end this, paper, I like to quote a quote by the Dr. Baba Sahib Ambedkar. He said that I measure the progress of the community by the degree of progress which movement have achieved. With this, I like to thank everyone. Thank you. Good afternoon. I'm C. Ishwaraya, Assistant Registrar Exams. First of all, I thank the coordinators
of the seminar for giving this opportunity to say something about Dr. B.R. Ambedkar on the topic nation building. Dr. B.R. Ambedkar was one of the most prominent leaders of modern India, known for his contributions to the fields of law, economics, and social reform. He was also a fervent advocate of the rights of Dalits, the lowest caste in the Hindu social hierarchy. His views on nation building were influenced by his experiences as a member of the Dalit community, as well as his study of political and social systems around the world. In this seminar paper, we will examine Dr. Ambedkar's views on nation building and the role of the state in promoting social justice and equality in 4 parts. Part 1, Dr. Ambedkar's vision of a just and equitable society. Dr. Ambedkar's vision of nation building was rooted in his belief in the principles of liberty, equality, and fraternity. He believed that a just and equitable society could only be achieved through the establishment of a strong and democratic state that was committed to promoting social justice and equality. In his view, the state had a crucial role to play in shaping the social and economic structures of society in order to ensure that everyone had equal access to opportunities and resources. Part 2. Dr. Ambedkar's critique of the Hindu social order. Dr. Ambedkar was a fierce critic of the Hindu social order, which he saw as inherently unjust and oppressive. He believed that the caste system was a major obstacle to the development of a just and equitable society, as it perpetuated inequality and denied basic human rights to millions of people. In his view, the state had a duty to dismantle the caste system and promote the social and economic empowerment of Dalits and other marginalized communities. Part 3, Dr. Ambedkar's role in drafting the Indian Constitution. Dr. Ambedkar played a key role in drafting the Indian Constitution, which was adopted in 1950. The Constitution enshrined the principles of liberty, equality, and fraternity, and provided for a range of social, economic rights for all citizens, including the right to education, healthcare, and social security. Dr. Ambedkar's vision of nation building was reflected in the Constitution, which he saw as a tool for promoting social justice and equality. Part 4, Dr. Ambedkar's legacy and relevance today. Dr. Ambedkar's legacy continues to be felt in modern India, where he is widely regarded as a champion of social justice and equality. His ideas and writings continue to inspire activists and scholars around the world, and his contributions to the fields of law, economics, and social reform continue to be celebrated. However, many of the social economic inequalities that Dr. Ambedkar sought to address remain deeply entrenched in Indian society, and his vision of a just and equitable society remains unrealized. Before I conclude, in conclusion, Dr. B.R. Ambedkar was a visionary leader who played a crucial role in shaping the modern Indian state. His vision of nation building was rooted in his belief in social justice and equality, and his critiques of the Hindu social order and the caste system continue to resonate today. While much progress has been made in the decade since his death, there is still much work to be done to realize Dr. Ambedkar's vision of a just and equitable society. All of you know, in our
programs in our university, I sing. Before I sing, no, I used to sing one stanza from Pushpa Vilapam. So I would like to sing one stanza from Pushpa Vilapam because Dr. B.R. Ambedkar, he is a Buddhist. So hence I would like to sing that as one stanza from Pushpa Vilapam. బుద్ధదేవుని భూమిలో పుట్టినావు, బుద్ధదేవుని భూమిలో పుట్టినావు, సహజమగు ప్రేమ నీలో నచచెనేము, అందమును హత్య చేసెడి అంతకుండా మైలబడిపోయెనోయ్ నీ మనుజ జన్మ. Thank you. And as usual, whenever I attend any, not the credit goes to first, not the Raghavan or me, first to all the 7 participants. Let's give a big round of applause, friends. Because I'm a sportsman. As you know, his brother is a very good cricket player. Telugu, I think all of you can understand Telugu, right? That was good. భవన్ నగర్ నుంచి మా ఇంటి నుంచి వచ్చేటప్పుడు వీళ్ళ ఇంటికి క్రాస్ చేసి వెళ్ళావు. వీళ్ళ బ్రదర్ ఎంత ఐ థింక్ నౌ ఇస్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఎంత బాగా స్పిన్ వేస్తాడండి వెంకట్ కుమార్. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫాండ్ మెమరీస్ విచ్ I have and he must be having right from 1970s because we have been here and most of you must have come from outside. Yeah, you are also here. అట్లే అలాగే లేదు. అవునండి 1989 పుట్టారు మీరు 2 years. ఓకే, జస్ట్ 2 years సైడ్. అలాగా కొన్ని ప్లేసులు మీకు మధుర స్మృతులు ఇస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆఫ్టర్ మై యూనివర్సిటీ, దిస్ ఇస్ వన్ మహిళా యూనివర్సిటీ అండ్ దిస్ ఆర్ ద 3 universities విచ్ ఐ లైక్ వెరీ మచ్. ఎందుకంటే దీని ముందు నుంచే వెళ్తుంటాను కాబట్టి 74 నుంచి 98 వరకు అండి ఐ వాస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ లెఫ్ట్ టు తుమ్మలగుంటకి వెళ్ళాం. సో అంత అవినాభావ సంబంధం ఉంది మీ యూనివర్సిటీ రోడ్తో. అప్పుడంతా చాలా ఫ్రీగా వదిలేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 2 పక్కల చెక్ పోస్టులు వచ్చేసాయి. మమ్మల్ని కూడా ఎక్కడికి పోతున్నారు సార్ అని చెప్పేసి అడుగుతుంటారు. సో దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ బికాస్ థింగ్స్ చేంజ్, టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ విల్ చేంజ్. నౌ జస్ట్ one question from anyone of all the 6 paper presentations. One question or your comment. But when you make a comment, please, my request is, say that we don't hurt the feelings of the paper presenters. Give your opinion in a way it should be given. Nothing wrong in it because this is the subject which is related to philosophy and social sciences. Everyone will have his or her own opinion. Like I don't know about your subjects. In my subject 2 into 2 doesn't make 4. It may be 5 also. 2 और 2 5 नहीं होता, 2 और 2 4 नहीं होता, 5 भी होता है. कैसा है तो it all depends on the person who is standing and giving the explanation. The reasoning in my subject of political science, the reasoning is very important. It doesn't mean that what I speak is always correct. You may be having your own views. So friends, let's start from this side. There are 3 women here sitting. Let's give the women empowerment. All of you have spoken about women empowerment. At least they'll make a dharna outside. Sir, you spoke something on the stage and you did not give us a chance. Anyone, ఏమ్మా మీరు తెలుగులో అయినా మాట్లాడచ్చు, అక్కడి నుంచి మాట్లాడినా మీకు మైక్ ఇస్తాం, లేదా ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడితే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. జస్ట్ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్, నథింగ్. ప్లీజ్ త్వరగా ముగించేద్దాం ఇంకొక 5 minutes.
పేరు అమృత జోష్న. నా పేరు అమృత జోష్న. నేను నెల్లూరు నుంచి విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చాను. అక్కడ తెలుగు విభాగంలో పరిశోధకురాలుగా ఉన్నాను. ఇది నాకు ఫస్ట్ సెమినారు, ఇదివరకే చెప్పాను మీకు. నాకు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నాకు ఈ నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడుందో తెలీదు. తిరుపతి పరిచయం, ఎస్వి యూనివర్సిటీ వరకే తెలుసు నాకు, ఇది తెలీదు. నేను సార్కి ఫోన్ చేసినప్పుడు నువ్వేం భయపడద్దుమా అని నాకు అడ్రస్ చెప్పి దగ్గరుండి భోజనానికి తీసుకెళ్ళడం కానీ ఈ రిసీవింగ్ అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంబేద్కర్ గారు స్త్రీ విద్యకు ప్రోత్సహించారు అని చెప్పాను. ఆ ఐడియాలజీ ఎక్కడో లేదు, నాకు ఇక్కడే కనపడింది. నన్ను ఇక్కడ చూపించడం, ఇక్కడ భరతమాత విగ్రహం ఉంది మా, ఇక్కడే ఈ యూనివర్సిటీ ఉంది, ఇక్కడ లోపలికి రా అని అవన్నీ చెప్పడం కానీ, నా రిసీవింగ్ కానీ, నన్ను జాగ్రత్తగా భోజనం దగ్గర తిన్నావా లేదా దగ్గరుండి కారులో తీసుకెళ్ళి చేపించి మళ్ళీ నన్ను ఇక్కడికి తీసుకురావడము, అది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ప్రాథమిక విద్య సాంస్క్రిట్ స్కూల్లోనే చదివాను. తర్వాత మా ఊర్లో సాంస్క్రిట్ లేకపోవడం వల్ల మిగతాదంతా తెలుగులోనే చదువు కొనసాగించాను. నా ప్రాథమిక విద్య ఎట్లా సంస్కృతంతో ముడిపడిందో నా మొదటి సెమినార్ కూడా సంస్కృతంతో ముడిపడింది. బహుశా ఇది నాకు మరిన్ని సెమినార్లు ధైర్యంగా చెప్పడానికి ఇది ప్రోత్సాహంగా ఒక ప్లాట్ఫామ్గా అని చెప్పచ్చు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. మరొకసారి ఈ నేషనల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు నిర్వహించిన ఈ అంబేద్కర్ యొక్క జయంతి వేడుకల్లో నేను ఒక భాగస్థురాలు అయినందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. No paper presenters, please. Already you spoke. Other than paper presenters. Yes. Audience, ఎవరన్నా ఒకరు వచ్చి just 1 or 2 minutes అండి. You can give your observations. ఒకటి చెప్తున్నాను, nothing wrong in it, because we are in a democratic system. We have the right to express our views, our feelings in a democratic way. Simple. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. అంబేద్కర్ జయంతి ముందుగా సార్ వాళ్ళు చెప్పారు 2013 నుంచి అంతకుముందు రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠము, ఇప్పుడు నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ. మొట్టమొదటిసారిగా సంస్కృత విద్యాపీఠంలో సెమినార్ నిర్వహించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. దీన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా గౌరవంగా ఫీల్ అవుతున్నాము. అలా అంబేద్కర్ అనేక అసమానతలను ఎదుర్కొని ఇవాళ మనకు రాజ్యాంగం కల్పించడం వల్లనే ఇవాళ ఉన్నత శిఖరాలలో ఒక ప్రొఫెసర్ స్థాయి నుంచి అన్నిగా చదువుకొని మంచి విద్యావేత్తలుగా ఇవాళ సుగమైన జీవితాలు అనిపిస్తున్నాం. కావున మనము అంబేద్కర్ జయంతి, అంబేద్కర్ వర్ధంతి ఆ రోజునటువంటి అంబేద్కర్ని చాలామంది మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు. కానీ ఏ రోజైతే అంబేద్కర్ జయంతి, అంబేద్కర్ వర్ధంతులు ఉంటాయో ఆ రోజే అంబేద్కర్ని గుర్తించుకుంటున్నారు. ఇది చాలా వరకు 50% చూస్తున్నాం. మనం ఏ రోజైతే అంబేద్కర్ని గౌరవిస్తున్నామంటే, మనం యాక్చువల్గా మన 50% పల్లెటూరు నుంచి వచ్చింటారు చదువుకొని. మనం ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాలలో ఎవరికైతే చదువు పరంగా హెల్ప్ చేయడం కానీ, యాక్చువల్గా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాక్షన్ చాలా ఉంది. ఇవాళ తెలియనట్టు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాక్షన్ ఉన్నత కాస్ట్ వాళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీలను బలి చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మేము రీసెంట్గా పల్లెటూరులో వెళ్తుంటాం, చూస్తుంటాం. అవగాహన అనేది లేదు. ఇంకా మారుమూల ప్రాంతాల్లో పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఓకే, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అవగాహన అనేది చాలా లేదు. కాబట్టి ఈ చైతన్యం ఎప్పుడైతే మనం తీసుకొస్తామో అంబేద్కర్ గారు కలిగినటువంటి కళను నిజం చేసినట్టు అంబేద్కర్ వాదులం అవుతామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇవాళ ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు, ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళతో సమానమని చెప్పి కూడా చదువు విషయంలో కానివ్వండి, మెటర్నిటీ లీవ్ కానీ ఇవాళ పొలిటికల్ పరంగా ఆలోచిస్తే చదువు 5వ తరగతి చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా డబ్బు ఉందని చెప్పేసి పార్లమెంటుల్లో అక్కడిక్కడ తెల్ల చొక్కాలు వేసుకొని తిరుగుతున్నారు. కానీ ఇవాళ ఒక ఆ హక్కు కల్పించినంటే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పుణ్యమే. ప్రతి ఒక్కరూ ఇవాళ ఓటు హక్కును కల్పించారంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే. కాబట్టి అలా మనం తలుచుకుంటూ పోతే అంబేద్కర్ గురించి ఈ భరతమాత అస్తమించిన కూడా చాలా తక్కువే. కాబట్టి ఈ భరతమాతపై ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా
మేలు చేసుకున్నటువంటి ఆ రాజ్యాంగమే కానీ అంబేద్కర్ రాయకుండా ఉండింటే అందరూ ఇంకా ఏమైపోయేవాళ్ళమో. ఇప్పటికి కూడా అంబేద్కర్ని గౌరవిస్తున్నాం, అంబేద్కర్ని చేస్తున్నాము అది ఇది అని చెప్తున్నారు. ఇప్పటికీ అంబేద్కర్ విగ్రహాలపైన దాడులు జరుగుతున్నాయి. స్వయంగా మేము కొన్ని సందర్భాలలో వెళ్ళి అక్కడ ధర్నాలు చేయడం కూడా చేశాము. అటువంటివి జరగకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ జరుగుతుందంటే అయ్యో మాకెందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు. మాకనే కాదు, మనకు అంబేద్కర్ అనేది ఒక జాతికో ఒక జాతికో కాదు, ఆ రాజ్యాంగం అందరికీ వర్తిస్తుంది కదా, ఒక జాతికి అనేది లేదు కదా. ఇప్పుడు ఒక ఎస్సీ ఎస్టీలు ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్లే ఓటు వేయటం లేదు, ప్రతి ఒక్కరు ఓటు వేస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరు ఏసీ కార్లో తిరుగుతున్నారు. కాబట్టి అంబేద్కర్ గురించి పాట పడేవాళ్ళు, అంబేద్కర్ ఓన్లీ అంబేద్కర్ జయంతి వర్ధంతులు కాకుండా ఇవాళ మన పిల్లలు చాలామంది, మన పిల్లలకి అయితే 10th క్లాస్ అయితే ఎక్కడ చదివిద్దాం, ఈ కార్మెంట్లోనే ఆలోచిస్తాం. ఇవాళ గ్రామీణ పల్లెటూళ్ళ ప్రాంతాల్లో చాలా చదువుకోలేని పరిస్థితులు కూడా పిల్లలు ఉన్నారు. అటువంటి పిల్లల్ని గుర్తించి ఇవాళ అనేక రకాలైన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అదే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పెట్టారు, ఎంజేపీ మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అంబేద్కర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. కనీసం మనం పుట్టినటువంటి ఊర్లో 10 మంది పిల్లలైనా మనం అప్లికేషన్స్ పెట్టి, ఇప్పటికి కూడా అవగాహన లేదు పిల్లలకి. ఇవాళ నోటిఫికేషన్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు, గురుకులాల్లో అడ్మిషన్ అవ్వండిని, కానీ ఆ నోటిఫికేషన్ కూడా తెలియకుండా చాలామంది. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ మా ప్రతి ఊర్లో ఉంటాం కాబట్టి కనీసం ఆ మెసేజ్ అయినా ఫార్వర్డ్ చేసి మీ వంతు ఒక పర్సన్ ఒక 5 మంది పిల్లల్ని విద్యావంతం చేస్తే అంబేద్కర్ జీవితాంతం మీరు రుణపం చేసినట్టే. ఫస్ట్ మనం ఏవైనా పూలమాలలు వేస్తాం, అన్నీ చేస్తాం, అది ఒక రోజుకే మర్చిపోతాం. అంబేద్కర్ గురించి మనం ఏ రోజైతే బడుగు పిల్లలంటే మనం స్వేచ్ఛ కోసం అంటే ఇప్పుడు జనాల్లో ఏ రోజైతే మనం పిల్లలకి చదువు పరంగా కానీ తెలియని వారికి అవగాహన చేస్తామో ఆ రోజు మనం ప్రతిరోజు అంబేద్కర్ గురించి మనం చేసిన వారు అవుతాం. అంబేద్కర్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి విద్యాపీఠ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా హృదయపు జయములు. జై భీమ్, జై అంబేద్కర్. So thank you, Mr. Malesh Garu. We can understand your anguish. The reason very simple, friends. Those who have stomach pain know the pain of it. Even the doctor may not be knowing it. Very simple. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను, ఒక టెన్నిస్ ప్లేయర్గా నాకు బ్యాక్ పెయిన్ అంటే మీకు ఎవరికైనా చెప్పాను అనుకో, నాకు భలే చెప్తున్నారు, బాగానే ఉన్నారు కదా సార్ అని. బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది, నాకు షోల్డర్ పెయిన్ ఉంటుంది, ది పెయిన్ ఉంటుంది, బికాస్ ఐ బీన్ ప్లేయింగ్ టెన్నిస్ ఫర్ ద లాస్ట్ 40 years. But luckily I never had any pain. We have the knee pains and nothing. But I can understand when some of my student comes and says that, sir, నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది సార్ అంటే, go and take rest. It may be good, it may be correct or it may not be correct, but I trust them because I am a player. So thereby what you said is 100% correct. So with this I once again thank my colleague and good friend Professor Raghavan garu, Venkatrao garu, Nallana garu and Murthy garu, because Murthy garu and Jappa Murthy because he is so junior to us. తన షార్ట్ నేమ్ నీ అది బాగుండదు, ఆ పేరుతో పిలుస్తామండి ముద్దుగా మేమంతా, మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ. సో అండ్ ఆల్ ద కొలీగ్స్ అండ్ పేపర్ ప్రెజెంటర్స్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఆఫ్ దిస్ గుడ్ యూనివర్సిటీ. సో లెట్ మీ మేక్ ఇట్ వెరీ బ్రీఫ్ విత్ ఇన్ 2 minutes because by it's 4:13, by 4:15 I'll finish off. As a student of political science and public administration, let me tell you, the organizing committee has taken up a very good challenge of having this particular seminar as a part of the 132nd anniversary of one of the greatest personality of Indian national movement. When you say who is the father of the nation, immediately you remember Mahatma Gandhi. When you say who is the father of the modern India, you remember Jawaharlal Nehru. Let me be, because I belong to political science, I don't belong to any political party. I have to talk in the way as a teacher. I should not take sides. Personally, I may like XYZ, it's my personal, but when I'm on the stage or when I'm in the classroom, I should be balanced. That's what I learned from some of my teachers, and I've been maintaining that for the last 33 years, friends. So when you say who is the father of modern constitution, you have to remember Ambedkar. These three and Patel, everyone. No one's participation in the national movement, whether it's a man or a woman or a boy or a girl, cannot be set aside. But there may be a few individuals who are the best,
and in that best, he is one. So when the Constituent Assembly was about to be set up, everyone was looking who has to be picked up. And from there they picked, okay, Ambedkar is the best. From hundreds of people, the Indian National Congress picked up Dr. B.R. Ambedkar. And as our friend, I think Ankit was telling, he may not have done this. Yes, for a country like ours with so much of diversity, so many cultures, with a long history, it's not that easy to put it in 400 pages or 500 pages. That's why he has given the option for us, go for amendments, make changes. But friends, let me tell you, as a student, Jawaharlal Nehru is not my relative, he is not my, but I like him because we are sitting here because of the contribution which Jawaharlal Nehru has made along with other leaders. Had he not taken up such kind of policies after 1947, maybe, I don't say will be, maybe India would not have been like this. Don't talk about, we can talk about Indira Gandhi, Manmohan Singh and Vajpayee, there's Narendra Modi, all this, but they come later. The first person always will have the enormous responsibility of starting from the scratch. If this university is good, the credit goes to the first team of people who have laid the foundation. And others must have contributed bit by bit. So thereby, to be very honest with you, it's Ambedkar who has given the Constitution, but to put the Constitution into right perspective, the responsibility fell on the Indian National Congress, led especially the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. So thereby, friends, 2 years, 11 months and 18 days, people say that in my subject, people will be doing some kind of research. Why you require 2 years, 11 months, 18 days to write a constitution? It's very easy to sit in an AC room and comment. It's very difficult to sit at that time with no computers, no laptops, nothing, just normal type machines. And you have to submit the draft to the Constituent Assembly, then the Constituent Assembly should go for a discussion, then they have to approve it, place it before the President for his consent or assent. This much of procedure was there, and Ambedkar did not want to take a chance at all. Looking at the partition of the country, the Hindu-Muslim division, sorry to use that word, but I have to. The Cold War outside, Nehru wanted to follow the policy of non-alignment. All these things made Ambedkar, who has studied the constitutions of the world in total, before he was asked to write the Constitution, and made it pakka to a large extent at that particular point of time. 1947 is different, 2023 is different. More than 75 years have gone by. So much of water has flowed under the bridge in our country. But yet, it is our responsibility to see, as someone was telling, let us remember, I think Mr. Mallesh was telling, it's not the question of August 15th or January 26th or April 12th, 13th, 14th, like that. Or Mahatma Gandhi's birthday, death anniversary, Indira Gandhi's birthday, death anniversary. It doesn't serve the purpose. That should be here. Every Indian should carry that. Then only the ideals, the Ambedkarism or Ambedkar ideology for which he has fought for more than 50 years will be fulfilled. Otherwise, we all meet, talk something, just go away and get on with our life. Yes, we have to get on with our life. But one thing, you have to see that the person who is sitting next to you is a human being, not X, Y, Z. That should start from the grassroots level, friends. That should start from the grassroots level, and especially in the educational institutions. I'm very sorry to say that out of my little experience as a student, as a researcher, and as a faculty in my university, we have that kind of discrimination. The person who is sitting next to me is mine or not. So this kind of mindset
should change. Only then Ambedkar's ideology and principles will go into this society. So thank you once again, my friend, for remembering me and giving me an opportunity to share some of my views on this particular dais. As I told you, this is my second visit to this room and three visits to your campus so far. I hope I can make it more in the coming days, and thanks a lot. సార్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఇప్పుడు సన్మానం అతిథికి, దాని ముందర ఒక్క విషయం చెప్తాను. అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన ఒక విషయం ఏమిటంటే, ఎవరు కొట్లాడుకోకుండా సమానంగా సొసైటీ ఉండాలి అనేదే వారి ఉద్దేశం. అది ఒకటి. రెండోది, దేశభక్తి ఉండాలి అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. తెల్లారి కూడా మనం విన్నాం. పీసీ గారు చెప్పినట్టు జనత, మమత, సమత అంటే జనుల కొరకు తన వాళ్ళు అని అనుకొని అందరూ సమానంగా ఉండాలి అని కోరినవారు. వారి యొక్క ఒక చిన్న విషయం చెప్పి ముగిస్తాను. సమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రైటింగ్స్ అండ్ స్పీచెస్ వాల్యూమ్ 1 పేజ్ నెంబర్ 358-60. జస్ట్ వినండి ఒకే నిమిషం. ఇట్ ఈస్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క మాట. దేశాన్ని గురించి వారు ఒకరు ఆలోచించారనేది. ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్ ఫర్ ద బ్రిటిష్ టు ఫ్రేమ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఇండియా. వాళ్ళు రాజ్యాంగం రాయనక్కర్లేదు. ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్ ఫర్ ద బ్రిటిష్ టు ఫ్రేమ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఇండియా విచ్ దే విల్ నాట్ రిమైండ్ టు ఎన్ఫోర్స్. అంటే వాళ్ళు పరిపాలించబోయేది లేదు. వాళ్ళేంది రాసేది? The same result will ensue if the constitution is imposed by one powerful section or a combination of such sections on other sections. I am therefore firmly of opinion that if Indians want dominion status, అంటే మన రాజ్యాంగాన్ని మనకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు, they cannot escape the responsibility of framing their own constitution. మన రాజ్యాంగాన్ని మనమే రాసుకోవాలి అని చెప్పి మన భారతదేశానికి వారు ఉన్నారనమాట. అంటే రెండు విషయం అండి. వీరు భారతదేశ రాజ్యాంగం రాశారు. అదేవిధంగా అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక విషయం ఏమంటే, మన యొక్క ర్యాకెట్ తయారు చేయాలి, మనకు ఆ యొక్క ఇది లేదు, పవర్. కాబట్టి అమెరికా వాళ్ళు అడిగారు, మేము చేసిస్తాము కానీ మా పేరు వేయాలని. వద్దు అన్నారు. ఇక్కడికి వస్తాము, మేము ట్రైనింగ్ చేసి మేము చేసుకుంటాము. రెండిటికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా ఒప్పుకోలేదు, కానీ అబ్దుల్ కలాం యాజ్ ఏ సైంటిస్ట్గా ఆయన ఒప్పుకోలేదు. మేమే తయారు చేస్తాం, మేమే వేస్తామన్నారు. అలాగనే తయారు చేశారు, వేశారు, ఫెయిల్యూర్ అయింది. 300 crores వేస్ట్ అయింది. కానీ ఒక్క భారతీయుడు కూడా ఒక ముసల్మానిని లేదు, ఆయన ఏమో లేదు అనుకోలేదు. అందరూ ఆయనకి సపోర్ట్గా ఉన్నారు. తర్వాత వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఎన్నో విమానాలు రోజుకు 100 పంపిస్తున్నాం. కాబట్టి కొన్ని విషయాల్లో దేశభక్తిని మనం చూడాలి. దేశభక్తి ఉంటే మనకి ఎటువంటి విరోధం ఉండదనేది అంబేద్కర్ యొక్క ఉద్దేశం. దాన్ని మనం పరిపాలించాలనే ఉద్దేశం. కాబట్టి ఈ ఒక చిన్న వాక్యాన్ని నేను చెప్పాలనుకున్నా, అంటే అంబేద్కర్ యొక్క రైటింగ్స్లో నుండి. ఇప్పుడు అతిథులు చాలా నియమశీలురు. బివి మురళీధర్ గారు ప్రొఫెసర్. మనం పిలిచిన వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి సమయానుపాలన చేయాలి. న్యాయంగా ఎవరు అంబేద్కర్ అంటారు కానీ సాధారణంగా పూర్తిగా వారి చరిత్ర, పూర్తిగా అసలు ఏం జరిగిందని నాకు తెలిసి నేను కూడా చదవలేదు పూర్తిగా, కానీ అప్పుడప్పుడు చదువుతూ ఉంటాను. చిన్నప్పుడు నాకు చాలా ఇష్టమైన ఒక యాక్చువల్గా నేను చెప్పేది ఏమంటే, వైష్ణవునిగా విష్ణువుని పూజిస్తా, శైవుడిగా శివుణ్ణి పూజిస్తారు, ముస్లింగా అల్లాని పూజించవచ్చు, క్రిస్టియన్గా జీసస్ పూజించవచ్చు. కానీ భారతదేశం కాన్స్టిట్యూషనల్ గాడ్ ఫర్ ఆల్ ఓన్లీ ద అంబేద్కర్. అది మాత్రం చాలా ముఖ్యమైన గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నాకు లేదు అని ఎవరు చెప్పలేరు. తల్లి నుండి పుట్టిన తర్వాత తల్లి నా తల్లి కాదని చెప్పలేరు. కారణం ఏమిటంటే, మనం ఈ దేశంలో ఉండి ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసింది, నేను పరిపాలించినట్లు లోపల దోసేస్తారు.
ఎందుకంటే వారిని మనం ఒబీడియన్స్గా ఉండాలి అనే విషయం అనమాట. కాబట్టి అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వారు ఎందుకు చెప్పొచ్చానంటే, అంబేద్కర్ గారు ఇన్ని విషయాలు, ఇన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ని వారు చేశారు అంటే దగ్గర దగ్గర 300 మంది దానికోసం వర్క్ చేశారు. కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీలో ఒక 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో కూడా అలాగా చైర్మన్షిప్లో వారు ఉండగా అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్ కానీ, గోపాలస్వామి అయ్యంగార్, కేఎన్ మాధవరావు, వాళ్ళనందరూ ఒకరికొకరు ఏమి చెప్పుకున్నారు అనే ఒక విషయాన్ని మాత్రం మీరు ఒక్కసారి చదివి చూడండి. నిజంగా మనలో ఏ భేదభావం ఉండదు, అంతా బాగా ఉంటుంది. అంటే అల్లాడి కృష్ణస్వామి గారి గురించి, అయ్యర్ గురించి ఆ యొక్క పార్లమెంట్లో అంబేద్కర్ గారు చెప్పడం, అంబేద్కర్ గురించి అందరూ చాలా గొప్పగా చెప్పడం అనేది వారి యొక్క మాటల్లో మనం చూడొచ్చు. అంటే రైటింగ్స్ అండ్ స్పీచెస్ వాల్యూమ్ 1, 2లో చదివి చూడండి అని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అతిథి గారికి సన్మాన కార్యక్రమం చేయాలని కోరుతున్నాను. ప్రొఫెసర్ వెంకట్రావు గారు, దక్షిణామూర్తి గారు, ప్రొఫెసర్ దక్షిణామూర్తి గారు ఆత్మీయులు, సభాముఖంగా ప్రొఫెసర్ మురళీధర్ గారు, ఈశ్వరయ్య గారు మా యొక్క ఆతిథ్యాన్ని మన్నించి తమరు వచ్చారు కాబట్టి మీకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఉన్నాను. టెన్ మినిట్స్ టీ బ్రేక్ అనంతరం నెక్స్ట్ సెషన్. ప్రదీప్ ఒకసారి ఎక్కడ ప్రదీప్ శ్రీకాంత్ ప్రదీప్ సార్ నెక్స్ట్ సెషన్ టీ బ్రేక్ అనంతరం అవుతాం కన్వీనర్ అండ్ మీరు వచ్చండి మీ ప్లేస్లో ఇచ్చారు సార్ అయిపోయినాయా?
मुरल सर नासी चारुकेश गारू सम्प्रति चारुकेश गारू सम्मानं कर्तुम् अहं चक्रवर्ती महोदयं निवेदयामि. ప్రొఫెసర్ ఎస్ మురళీధర్ రావు గారు నాస్తి డాక్టర్ ఏ చారుకేష్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చారుకేష్ డాక్టర్ వేద ప్రకాష్ బోర్కర్ जी नहीं डॉक्टर आदन्ना नायक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन श्री अंकित कुमार मीना जी श्री ఈశ్వరయ్య గారు అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ టెన్ మినిట్స్ టీ బ్రేక్ అండి. నెక్స్ట్ 10 నిమిషాల తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్ కన్వీనర్ వచ్చేసి ప్రతిభాగ్.
नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः. Now I request Dr. S. Madhuri Paradesi Madam come on the decks. त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अस्यां संगोष्ठ्यां तत्र अध्यक्षरूपेण आगतवत्यः महिला श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयात् समागताः भवन्ति. असोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एस माधुरी पारदसी मैडम एम.कॉम LLM PhD उपाधिधारिणः भवन्ति. तासां वर्क एक्सपीरियंस भवति. असोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय तिरुपति. तेषां विभाग वर्तते लॉ. रिसर्च एक्सपीरियंस भवति रिसर्च एंड टीचिंग 19 years both UG and PG level. Research publication one book publication published. Book chapter 10, journal 40, seminar conference attended international 15, national 50, organized national seminar 7, PhD ongoing 4, editorial board member 2, title of 3 best publication, Lok Adalat, is it potential to change the legal landscape, artificial intelligence in relation to legislation and legal informative, prevention of cyber crimes in India and overview. तेषां administrative position bhavati head of the Department of Law, SPMVV, IPR activity coordinator, Women Safety Cell coordinator, member Hostel Condemnation Committee, SPMVV, member Sexual Harassment and Violence Against Women, SPMVV, member BUS Department of Law, SPMVV, member of CORI AI, area of teaching, research experience, research field, business law, IPR, labor law, constitutional law, women and law, environmental law, publication in international law, restorative justice, international humanitarian law and civil procedure code, legal research methodology and human rights वर्तते. सम्प्रति पत्रपाठका भवन्ति डॉक्टर NV श्रीनिवास राव, डॉक्टर तपन कुमार गड़ई, डॉक्टर ओके प्रथम तावत् भवन्ति अस्माकं शिक्षा आचार्य विभागस्य आचार्य भवन्ति एस दक्षिणामूर्ति गारु, डॉक्टर NV श्रीनिवास राव, डॉक्टर तपन कुमार गड़ई, डॉक्टर ज्ञानंजन पंडा, डॉक्टर सुधांशु शेखर महापात्र, डॉक्टर SK मस्तानवल्ली, डॉक्टर V चैतन्य, डॉक्टर मुक्करन्ना, डॉक्टर G रंगाराव महोदया भवन्ति पत्रपाठकाः. ओके समय भवति 7 to 10 इति अस्माकं आचार्य चंद्रलाल महोदयः उक्तवन्तः. मैडम नाउ I request you to ओके मैडम ओके. सम्प्रति सार दक्षिणामूर्ति गारु आगच्छन्तु, भवतां पत्रपाचनं कुर्वन्तु इति अहं प्रार्थयामि. सर्वेषां कृते शुभसायङ्कालम्. अत्र पत्रपठनमिति मया तु न स्थापयामि, केवलं पत्रिकासीदागतमस्ति तत् सज्जीकृत्य किञ्चिदेव तत्र तु वक्तुम् इच्छामि. క్షమ్యతాం. నేను పత్రం ప్రదర్శన అంటే పత్ర సమర్పణ అనేటువంటిది చేయటం లేదు. పత్రికల్లో వచ్చిన విషయాలన్నింటినీ కూడా క్రోడీకరించి ఒక 5 నుంచి 7 నిమిషాల లోపల కంప్లీట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఏతేతు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మహోదయः వర్తతే తత్ర ప్రాయశः మార్జినలైజ్డ్ వాయిస్ ఇది కథ్యతే. తత్ర తు ఇత్యుక్తే బలహీన వర్గాలంటే అట్టడుగు వర్గాల వారికి వారి యొక్క ఒక స్ఫూర్తి తత్ర వర్తతే. ఏతేతు ప్రాయశः
पॉलीग्लैट ऑरेटर इति उच्यते, बहुभाषा प्रज्ञाशाली एवं तदेव नास्ति केवलं जर्नलिस्ट अपि एतत् आदौ बिकास् इस् जर्नलिस्ट he has gone to the roots of the people downtrodden एवं एतेषां विषये बहु प्रातः बहवः बहुविधः कथितवन्तः ते तु चिन्तितवन्तः संस्कृतभाषा तु अस्माकं राजभाषा राष्ट्रभाषा भवितव्यम् इति तदानीन्तनकाले एव ते चिन्तितवन्तः he thought that the Sanskrit should be the official language of the entire nation but एतावता तत् साकारं न चेदपि वयमपि किञ्चित् तस्मिन् विषयेपि किञ्चित् विचारं करणीयं वर्तते अवश्यं we have to thought that also एवं द्वितीयमस्ति एते तु कालान्तरे बौद्धं तु स्वीकृतं वर्तते has taken Buddhism तदनु प्रायशः 21 पुस्तकानि तत्र धम्मपदं तत्र तस्मिन् विषये बहुधा कार्यं कृतमस्ति तत्र he has wrote number of things on that particular book and he has made a number of things on 21 books each and everything వారు స్పృశించినటువంటి స్థలం లేదు మల్టీఫేసెడ్ అంటే అన్నీ ఎక్కడ వాడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కానీ లేదంటే ఇంకా వేరే విద్యా విషయం కానీ అన్నింటిని చూసామంటే మనకి ఒక విధమైనటువంటి చెప్పాలంటే జాతీయ తెలవారు మనం చెప్పినట్టు జనతా మమత అన్నట్లు చెప్పినట్లు మన వీసీ గారు చెప్పినట్లు జనుల్లోనే మమేకమైపోయి వారు చాలా చక్కగా వారి దీంట్లో చేయగలిగారు వాటిని మనం అంటే వారిని కేవలం ఒక ఇప్పుడు ఇందాకనే చెప్పారు మన మిత్రులు ఒక భగవంతుడు అనేటువంటి ఒక్కొక్క దీనికి ఉండొచ్చు మన రాఘవన్ గారు చెప్పారు అట్లా వారు చెప్పినటువంటిది అందరి మనసులో ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే అంబేద్కర్ వారే ఎందుకంటే వారు అందరి కోసం పనిచేశారు ఈరోజు కాన్స్టిట్యూషన్ సంవిధాన శిల్పి సంవిధాన చక్రవర్తి సంవిధాన స్రష్ట అనొచ్చు వారు చెప్పాలంటే అటువంటి వారి యొక్క స్ఫూర్తిని మనం తీసుకొని ముందరికి నడవాలి అందుకోసమే ఈ 3 రోజుల సంగోష్ఠి జాతీయ సంగోష్ఠిని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇందులో అహమికమికయ మన విద్యార్థులందరూ మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు కానీ విద్యార్థులు కూడా బాగా పాల్గొని వారి యొక్క స్ఫూర్తిని తీసుకోవాలని చెప్పి నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను వారు పైన ఒక ఈ నడుమ వచ్చినటువంటి ఒకే ఒక ఇదేమిటంటే ఒక గోరటి వెంకన్న గారు అని చెప్పి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు విన్నర్ వారు గోరటి వెంకన్న గారు అంటే తెలంగాణ ప్రాంతీయులైనప్పటికీ కూడాను ప్రముఖ సాహిత్యవేత్త వారు చక్కగా ఎంత బాగా రాశారంటే ఒక 11 చరణాలతో రాశారు బోధి నీడలో కొలువైన ఓ ముని వీధి వీధిలో నీ వెలిగే ఆమని జొన్నంబలి కలి ఎసరు పేగులెల్ల కొరికే పసరు వెన్నుకు అంటిన పొట్ట తుమ్మపట్ట తునికి సుట్ట పరుసుకునే సాప దప్ప పట్టె మంచములు లేని మట్టి మనుషుల ఒంటికి పట్టు కాంతులొంపినావు నర్రెంగ వాసాలకు నరికి మోసుకొని వచ్చి గెనుపులన్నీ నునువు చేసి ఎరుపు తెలుపు పట్టి దిద్ది మర్రి మామిడాకులతో గుడి పందుర్లే వేసిన దేవుని చూడని వారికి నీవే దేవుడు అయితే ఎంత చూడండి అక్కడ నీవే దేవుడైనావు ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఆనాటి ఆచార వ్యవహారాల ప్రకారం గుళ్ళో వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రవేశం లేదు అయినప్పటికీ కూడాను వాళ్ళందరికీ కూడా దేవుడు ఎవరు అంటే అంబేద్కర్ అయినటువంటి చెప్పారు ఇంకో చోట చెప్తున్నా చూడండి బుద్ధునో లేని అందం చేతుల వెన్నెలే చందం అద్దమో లేనిడందం ఆశయాల కొలబింబం శీలమే నీకున్న గుణం నీ గెలుపుకు అదే వరం జ్ఞానమే నీకున్న ధనం పీడితులకు అదే బలం అన్నీ ఆయనకు ఉండేటువంటిది ఏమంటే జ్ఞానమే నీకు బలం అని చెప్పేసి చెప్పారు ఆయన ఇటువంటి స్ఫూర్తితో మనమందరం కూడా ముందరికి నడవాలి ఇటువంటి సంగోష్ఠుల్లో మనకి ఇటువంటి జాతీయ సదస్సుల్లో మనము వీటన్నింటిని కూడా కేవలం సదస్సు నిర్మించేసి ఒక మామూలుగా 10 మంది కూర్చొని మాట్లాడుకునే పోయేటువంటి కాకుండా సాకారం కావాలి ఉదయం చెప్పినట్టు అధ్యయన కేంద్రం రావాలి అధ్యయన కేంద్రం ద్వారా మనము వీరి యొక్క విషయాలను అన్నింటిని కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళాలి అప్పుడే మనకి అంబేద్కర్ నిజమైనటువంటి జయంతిని వర్ధంతిని జరుపుకున్న వాళ్ళు అవుతామని చెప్తున్నాను నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా మిత్రులు వెంకట్రావు గారికి చక్రవర్తి గారికి నల్లన్న గారికి కూడా మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను నమో నమః थैंक यू सर संप्रति डॉक्टर NV श्रीनिवासराव
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याञ्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। भारतरत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयस्य जन्मतिथिं पुरस्कृत्य त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठ्यां प्रत्येकस्मिन् सत्रे अध्यक्षरूपेण स्थिताः परदेशी महाभागायाः एवं कन्वीनर् रूपेण सचिवरूपेण स्थिताः अस्मदीयाः मम मित्रमणयः प्रदीप कुमार बाग महोदयानां कृते धन्यवादान् समर्प्य पुरतः स्थितान् अध्यापकान् एवं कर्मचारिणां कृते धन्यवादान् समर्प्य मद्विषयस्योपरि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयस्य शिक्षानीति उपरि किञ्चित् वच्मि। स्वातंत्र भारतस्य संविधानशिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयस्य शिक्षानीतिः। अंबेडकर महोदयस्य दर्शनं तस्य भाषणे लेखने संशोधने च अवगन्तुं शक्यते। मानवोपलब्धिः शिक्षा अनन्यसाधिका इति वक्तुं शक्यते। प्राचीनकाले एव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयः बहु कष्टान् अनुभूय विद्यार्जनं कृत्वा अनन्तरं कोलंबिया विश्वविद्यालयात् तदनु लंडन आर्थिकशास्त्र महाविद्यालयात् PhD प्राप्य उपाधिं प्राप्य अनन्तरम् अध्यापकरूपेण आसन्। तस्मिन् समये अंबेडकर महोदयः अनुस्यूत जनजातीनां कृते तेषां कल्याणाय तेषाम् उद्धरणाय च बहुविध प्रयत्नान् आरभन्त। एवं प्रकारेण अंबेडकर महोदयस्य शिक्षानीतिर्पश्यामश्चेत् प्राथमिकं लक्ष्यं भवति यत् हिंदू समाजस्य पुनर्निर्माणम्। प्राचीनकाले या शिक्षा व्यवस्था आसीत् सा शिक्षा व्यवस्था मलिना जाता मध्ये। किमर्थमित्युक्ते मुस्लिं काल शिक्षा व्यवस्था तद् अनन्तरं ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था अपि आगता। एवं प्रकारेण शिक्षा व्यवस्थायां भिन्न
यं निजः परो वेति गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्. अंबेडकर् महोदयः अर्थशास्त्रे PhD विद्यावारिधिं कृतवान्. लण्डन् नगरे अर्थशास्त्रविश्वविद्यालये एवं कोलम्बिया यूनिवर्सिटीतः. एवम् अनन्तरं सः वैदेशिकं प्रति न गतवन्तः. भारते तत्र उषित्वा सर्वे भारतीयाः समानाः समानरूपेण एव अग्रे गन्तव्या इति निश्चप्रचं तेषां स्थितिः संस्थाप्य परिश्रमां कृतवन्तः. एवं प्रकारेण तत्र ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षडिदं मित्रलक्षणमिति वदति. तत्र स्वमित्रवत् वसुधैव कुटुम्बकभावनया मित्रवत् सर्वेषां कल्याणार्थम् अत्यन्तविस्तृतं भारतराज्याङ्गं निर्मितवान्. भारतराज्याङ्गस्य रूपशिल्पी डॉक्टर BR अंबेडकर महोदयः. एवं प्रकारेण शिक्षाद्वारा आदरः, विश्वासः, मानवीयगौरवः, भातृत्वभावना, निर्भरता, स्वतन्त्रता, सभ्यता, संस्कारादिगुणाः विकसितुं शक्यते इति उट्टङ्किताः अंबेडकर महोदयः. एवं सर्वविधकल्याणाय सर्वविधसौभाग्यार्थं समृद्धिं प्राप्तुमपि अंबेडकर महोदयः बहुविधपरिश्रमं कृतवन्तः भारतीयानां कृते. एवं शिक्षाद्वारा एव सर्वेषु विद्यमानाः सामाजिक असमानताः दूरीकर्तुं शक्यते इति अंबेडकरस्य वादः आसीत्. एवं प्रकारेण सर्वविध समानता भावना आनेतुमपि सः प्रयासः कृतवान्. एवं कर्ता कारयता चैव प्रेरकश्चानुमोदकः चत्वारः सुकृते दुष्कृते समभागिनः इति. कर्ता नाम राज्यांग निर्माता, कारयिता, अन्ये ये सन्ति तेषां सविधे उपविश्य कारितवान्. एवं प्रेरणा अपि दत्तवान्. एवं प्रकारेण शुभकार्यक्रमे प्रेरणा कर्ता कारयिता प्रेरकः शुभकार्यक्रमे भवति चेत् इदानीं 75 इयर्स् जातं. 73 इयर्स् राज्यांग विस्तारः जातः. परन्तु इदानीम् अपि तेषां वास्तविक विकासः राज्यांगस्योपरि पतति. एवं प्रकारेण भारतस्य विकासः अपि जातः इति. किमर्थमित्युक्ते सर्वेषां कृते भारतीयानां भारतभूमौ ये जनिं प्राप्तवन्तः तेषां बालकानां कृते निःशुल्कं विद्या अनिवार्यरूपेण दातव्या इति सर्वप्रथमं तेन उक्तः. एवं प्रकारेण अनुस्यूतजनजातीनां कृते तेषां कल्याणार्थं तेषां विद्याविकासार्थमपि प्रयत्नः करणीयः इति अंबेडकर महोदयेन आदौ उक्तवन्तः. इदानीमपि चर्चा अपि इदानीं वर्तमाने चलति, चलिष्यति अपि. एवं प्रकारेण इदानीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आगता 2020 मध्ये. पूर्वमेव उक्तवान् अंबेडकर महोदयः. किमुक्तवान्? भारतीयभाषासु अधिकं बलं दातव्या इति. प्राथमिकविद्याभ्यासः मातृभाषायामेव भवेत् इति राज्यांगे परिकल्पितः. एवं प्रकारेण भाषायाः कृते अपि अधिकबलं महोदयः दत्तवान्. तत्रापि तत्र मातृभाषायाः रक्षणम् आर्टिकल् अनुच्छेदः 29 1 क्लास् मध्ये अस्ति. मातृभाषायाः रक्षणम् अवश्यं करणीयमिति. इदानीं 2020 मध्ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी मध्ये प्रारम्भः जातः. मध्ये केचन आगताः. अस्माकं राज्ये अपि आन्ध्रराज्ये अपि मातृभाषायां विद्याबोधना आवश्यकता एव नास्ति, आङ्ग्लमाध्यमेन एव विद्यार्जना भवेत् इति निर्णयः स्वीकृतवन्तः. तत्र राजकीयनेतारः आगच्छन्ति गच्छन्ति, परन्तु राज्यांग परिकल्पित प्राथमिक अधिकारः अस्ति किल, कोऽपि सम्मार्जयितुं न शक्यते. राज्यांगं नाम ललाटलिखितरेखावत् इदानीं प्रकाशयति. हरिणापि हरेणापि विधात्रापि सुरैरपि ललाटलिखिता रेखा परिमाष्टुं न शक्यते. तद्वदेव राज्यांगं प्रकाशयति इति भारतराज्यांगम्. एवं
तत्र लौकिकशिक्षायाः सेक्युलर् एजुकेशन् उपरि अपि ते अधिकबलं दत्तवन्तः। अनुच्छेदः 25 क्लास् नम्बर् 1 एवं अनुच्छेदः 28 क्लास् नम्बर् 1, अनुच्छेदः 28 क्लास् नम्बर् 2, अनुच्छेदः 28 क्लास् नम्बर् 3 मध्ये अपि तत्र लौकिकशिक्षायां कृते अधिकबलं दत्तवान्। एवं निशुल्क अनिवार्यं शिक्षा अपि अवश्यं भवेत् इति सर्वप्रथमं अम्बेद्कर् वर्येण उक्तम्। अनुच्छेदः 15 तत्र अनुच्छेदः 45 मध्ये अपि परिकल्पित हक् प्राथमिक अधिकारः भवति। एवं तत्र शैक्षिकसंस्थासु अवसरस्य समानता अपि दातव्या, नाम एजुकेशनल् आपर्चुनिटीस् शैक्षिकसंस्थासु आर्टिकल् 29 क्लास् नम्बर् 1 मध्ये अपि तत्र स्थापितः। एवं प्रकारेण तत्र सत्यस्वरूपी सत्यशिल्पी अम्बेद्करः इति वक्तुं शक्यते। सत्यानुसारिणी लक्ष्मीः, कीर्तिः त्यागानुसारिणी, अभ्यासानुसारी विद्या, बुद्धिः कर्मानुसारिणी। एवं प्रकारेण कीर्तिः त्यागानुसारिणी भवेत्। अम्बेद्करः इदानीमपि चिराब् आसीत्। किमर्थं नाम तेषां कार्यभारवशात् भारतमातुः सेवां कृतवान् इति समग्र राज्यांगं निर्मितवान्। एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न प्रकारक तत्र विषयाः तत्र शिक्षाद्वारा शिक्षानीतोऽपि संस्थापितः। अनन्तरं स्वतन्त्रतायाः अधिकारः अपि, ईक्वालिटी, रैट् आफ् फ्रीडम्, एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न अभिप्रायाः अपि तत्र राज्यांगे संस्थापिताः। अधिकारः 19 नाम आर्टिकल् 19 तः 22 पर्यन्तं वाक् स्वतन्त्रता, 19 मध्ये वाक् स्वेच्छा अस्ति भो, वाक् स्वतन्त्रता अस्ति 19। एवं प्रकारेण 20 मध्ये अपराधेषु रक्षणमपि परिकल्पितमस्ति। एवं 21 मध्ये आर्टिकल् 21 मध्ये जीवनस्य रक्षणं, व्यक्तिगतस्वतन्त्रता अपि अस्ति। एवं प्रकारेण तत्र महिला शिक्षा अनिवार्या, महिलानां कृते अवश्यं निशुल्क विद्या दातव्या। तथा आर्टिकल् 15 क्लास् नम्बर् 3 मध्ये भारतभूमौ ये जनिर्प्रादुर्भूताः महिलाः तासां कृते अवश्यम् अनिवार्यं कटिबद्धं नियमबद्ध शिक्षा दातव्या इति नियमः तत्र राज्यांगेन परिकल्पितः अम्बेद्कर् महोदयः। एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न प्रकारक विषयान् अपि समग्ररूपेण विश्वे अत्यंत समृद्धिरूपेण समग्ररूपेण रचितराज्याङ्गमस्ति अस्माकं भारतराज्याङ्गमेव। तेषां कार्यभारः अधिकः अपि तेषां सेवा, भारतस्य सेवा, भारतदेशस्य सेवा गरिमा चिरा भवति। एवं प्रकारेण केचन आगच्छन्ति गच्छन्ति भवतु नाम अम्बेद्करस्य नाम चिरा भवति। किमर्थमित्युक्ते सर्वविध कल्याणार्थं, सर्वेषां कल्याणार्थं, समृद्धिं सम्पादनार्थं सर्वेषां कृते समानता दातव्या। सहानुभूति पूर्वभावना, सहनशीलत्वभावना, सत्प्रवर्तनशीलत्वम्, एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न प्रकारक उन्नत शिखरायमाण शक्तिस्वरूप विषयान् अस्माभिः पालनीयः। अम्बेद्करेण उक्त विषयान् अपि पालनीयः। एवं प्रकारेण अग्रे गच्छामश्चेत् सर्वत्र स्वातन्त्र्यमपि सम्पादयितुं शक्यते, सर्वत्र समानता अपि सम्पादयितुं शक्यते, सर्वत्र भातृत्वभावना अपि सम्पादयितुं शक्यते। एवं प्रकारेण तत्र शोभायमानं भवति, सर्वविधकल्याणमपि आनयितुं शक्यते इत्युक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः सीनु गारु। अम्बेद्कर् महोदयस्य बाल्यजीवनम् आरभ्य एव शिक्षा प्राप्ति एवं शिक्षाया कथं सर्वेषां कृते प्राप्तिर्भवति इति एतस्मिन् विषये उक्तवन्तः। सम्प्रति डॉक्टर तपन कुमार घड़ी महोदयः आगच्छन्तु, भवतां पत्रवाचनं कुर्वन्ति इति प्रार्थयामि। ॐ मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सभा सरस्वती नमः। भारतीय संविधानस्य निर्माता, आधुनिक भारतस्य शिल्पकारः तथा च
ज्ञानस्य प्रतीकः भारतरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर महोदयस्य 132 जन्मजयन्तीमुपलक्ष्य प्रचलितायां त्रिदिवसीया राष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्यां वयं सर्वे उपस्थिताः। कार्यक्रमे अस्मिन् सत्राध्यक्षारूपेण वेदिकाम् उपरि उपस्थिताः सन्ति श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयस्य लॉ विभाग अध्यक्षाः डॉक्टर माधुरी परदेशी महाभागाः। ताभ्यः नमस्कारान् विनिवेद्य अस्य सत्रस्य संचालक महाभागाः भवन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अध्यापकः डॉक्टर प्रदीप कुमार बाग महाभागाः। तान् अपि नमस्कारान् विनिवेद्य अग्रे उपस्थिताः सन्ति आचार्यवर्याः। सर्वेभ्यः नमस्कारान् विनिवेद्य अस्य कार्यक्रमस्य ये संयोजकाः भवन्ति आचार्याः पी वेंकटराव महाभागाः, आचार्याः नल्लाना महाभागाः, आचार्याः जे बी चक्रवर्ती महाभागाः। तान् अपि अभिनन्द्य नमस्कारान् च वितरीय अग्रे उपस्थिताः प्राणभूताः छात्राः एव भवन्ति। तान् अपि सर्वेभ्यः तेभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अपि छात्राभ्यः अपि नमस्कारान् विनिवेद्य मम विषय उपस्थापनं करोमि। मम विषय भवति विवेकवान् डॉक्टर भीमराव आम्बेडकरः। विवेक इति शब्दस्य अर्थः भवति भेदः। तर्हि एवं मा चिन्तयन्तु भेदवान् आम्बेडकरः इति। विवेकवान् आम्बेडकरः सामान्यरूपेण वयम् अस्माकं प्रचलितः शब्दः अस्ति विवेकः। अरे भवतः विवेकः नास्ति वा, भवत्या विवेकः नास्ति वा। विवेकशब्दस्य प्रयोगः तत्रैव भवति यत्र भेदज्ञानं भवति। समीचीनम् असमीचीनं, चेतनम् अचेतनं, नित्यम् अनित्यं, ज्ञानम् अज्ञानं, किं सत्यं किम् असत्यं यस्य निकटे एषः विचारः अस्ति सः विवेकवान् एव भवति। तदर्थं मम विषयः अस्ति विवेकवान् डॉक्टर भीमराव आम्बेडकरः। तर्हि कथं सः विवेकवान् इति एकवारम् अहम् अत्र आलोचयामि। तेषां मुखात् बहूनि वचनानि एव निःसृतानि। ते तु बहूनि वचनानि एव स्वकीयपुस्तके एव लिखितवन्तः। तत्र अहं तं धर्मं विश्वसिमि यद् धर्मः स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व विषय शिक्षण ददाति। मैं वही धर्म को स्वीकार करूँगा जो धर्म मुझे स्वतंत्रता देता है और मुझे समानता देता है और बंधुत्व के जैसा आचरण जिससे मुझे मिलता है, उसी धर्म को मैं स्वीकार करूँगा, ऐसा उनका कहना है। तर्हि अत्र भेदः, जिस धर्म में मुझे सभी चीज़ प्राप्त होगा उसी धर्म को मैं चूज करूँगा, ऐसा उनका मतलब है। तो इसीलिए जिस धर्म को इसी तरह का सौविध्य उनको नहीं मिलेगा, एवं प्रकारेण सौविध्यम यत्र न मिलति वा न मिलिष्यति तम धर्मम ते त्यक्तवन्तः। ते इतिहासं निर्मातुं न समर्थाः जे इतिहासं विस्मरन्ति। जे इतिहासं विस्मरन्ति ते इतिहास निर्मातुं न समर्थाः इति अपि तेषां वचनं भवति। तत्र शास्त्रे अस्ति विस्मरणे हानिः। यदि कस्यापि किमपि वचनं यथा छात्राः परीक्षा समये यदि उत्तरं तेषां विस्मरणं भवति चेत् हानिः वा लाभः? हानिः एव। तदर्थम् एतेषां विवेकः किं कथयति न जे इतिहासं विस्मरन्ति ते इतिहासं निर्मातुं न समर्थाः एव भवन्ति। तर्हि विस्मरणे हानिः। तदनन्तरं किम् उक्तवन्तः? विद्यार्जनं कृत्वा शिक्षिताः भवन्तु। यदि शिक्षिताः भवितुम् इच्छन्ति तर्हि विद्यार्जनमेव कुर्वन्तु। पुनः सर्वे संगठित भूत्वा एव तिष्ठन्तु। पुनः सदा सर्वदा कार्यरताः भवन्तु। तर्हि ये कार्यरताः भवन्ति ते विद्यार्जनमेव कुर्वन्ति। ये विद्यार्जनमेव कुर्वन्ति ते संगठित भूत्वा एव तिष्ठन्ति। विद्यार्थिनः एव अत्र आगत्य सर्वे गैदरिंग भूत्वा एव सर्वाणि कार्याणि एव समापयन्ति। यूनिटी वर्क इति कथयामः, इंडिविजुअल और यूनिटी वर्क। तर्हि यथा च उक्तं नीतिशतककारेण विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तधनं विद्या भोगकरी जस सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता
विद्याराजसो पूजित न तो धनं विद्याविहीनः पशुः। तर्हि कथनस्य तात्पर्यं तेषाम् उद्देश्यं किम् अस्ति? ये विद्या अवश्यमेव स्वीकरणीया वा विद्यार्जनं निश्चितमेव करणीया भवति। विद्यार्जनं विना किमपि साधयितुं भवन्तः न समर्थाः इति। पुनः संघटितविषये अपि कथितमस्ति शास्त्रे, संगच्छध्वं सबदध्वं संगो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा, इसी कारण वो वंदनीय है। देवतानामपि आचरणम एवं आसीत्। कथम इति चेत न हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले और हमारा मन एक हो। तर्हि तेषामपि अम्बेडकर महाभागानामपि चिन्तनम् एवमेव अस्ति। पुनः धर्मः मनुष्यनिमित्तं वर्तते, मनुष्यः न धर्मनिमित्तमेव। धर्मः केषां कृते न मनुष्यनिमित्तमेव वर्तते, परन्तु मनुष्यः न धर्मनिमित्तम्। अतः मनुस्मृतमपि वर्तते, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः इति। मानव अस्तित्वस्य अंतिम लक्ष्यं भवति बुद्धेः विकासः। अम्बेडकर महोदयस्य वचनमस्ति किं न मानव अस्तित्वस्य अंतिम लक्ष्यं भवति बुद्धेः विकासः। अतः यदि बुद्धेः विकासः न भवति तर्हि कार्यकर्तुं यदि वयं कार्यं कुर्मः चेदपि तत् कार्यं समीचीनं न भविष्यति, असमीचीनमेव भविष्यति। किमर्थं? बुद्धेः लक्षणमपि शास्त्रे अस्ति, अध्यवसाय बुद्धिः इति। बुद्धिः किं करोति शरीरे? न अध्यवसायं नाम निश्चितं कार्यमेव सम्पादयति। तदर्थं श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अस्ति, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि बुद्धेः विकासः न भवति तर्हि नाशः भविष्यति, अत्र सन्देहः एव नास्ति। तर्हि अस्मिन् विषये साङ्ख्यदर्शने अपि बुद्धेः लक्षणविषये अस्ति, अध्यवसाय बुद्धिधर्म ज्ञानं वैराग्य ऐश्वर्यं सात्विकमेतद्रूपं तामसमस्मात् विपर्यस्तमिति। तर्हि चिन्तयन्तु, अम्बेडकर महोदयस्य चिन्तनं भगवद्गीतायामपि अस्ति, तत् यथा चिन्तनं ते कृतवन्तः शास्त्रे अपि वर्तते। तत् दर्शने अपि भवतु, स्मृतौ अपि भवतु, श्रुतौ अपि भवतु। मनुस्मृतिधर्म रक्षति रक्षितः मनुस्मृतौ एव वर्तते। पुनः अम्बेडकर महोदयस्य वचनं, मनुष्यः नश्वरो भवति तस्य विचारः अपि नश्वरः। यदि अस्माकं विचारः उत्तमः अस्ति तर्हि तस्य विचारस्य प्रचार प्रसारः करणीयः। यदि विचारः उत्तमः अस्ति तर्हि निश्चितमेव विचारस्य प्रचार प्रसारः भवन्तः कुर्वन्तु। यथा वृक्षस्य जीवनार्थं जलम् अपेक्षते, जलं नास्ति चेत् वृक्षस्य जीवनमेव नास्ति। तथैव स्वविचारं प्रतिपादयितुं, स्वविचारम् अग्रेसारयितुं प्रचारः प्रसारश्च अपेक्षते। पुनः तेषां वचनमस्ति, दीर्घजीवन अपेक्षया अस्माकं जीवनं महान् चेत् वरम्। अस्माकं कृते दीर्घजीवनं शतायु भव 100 इयर्स् नापेक्षते। अस्माकं कार्यं यद् अस्ति तत् 200-300 इयर्स् पर्यन्तं यदि जनाः स्मरन्ति तदेव अस्माकं जीवनम् इति तेषां वचनम्। एवं प्रकारेण तेषां पतिपत्नी विषये अपि अस्ति, पतिपत्न्योर्मध्ये सम्बन्धः तथैव भवितव्यः यथैव अस्माकं मित्रैः सह संबंधः। मित्रों के साथ जैसे हमारा संबंध है, पति और पत्नी के साथ भी वैसा संबंध होना चाहिए। ये अम्बेडकर महोदय से अपि वचनमस्ति, अमूल्य वचनमिति तेषां सूची अस्ति, एका सूची अस्ति, सूचो एव अस्ति। एवं प्रकारेण अत्र मम विषय यद् अस्ति, विवेकवान् डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विवेक इति शब्दस्य भेदः एवं प्रकारेण किं सत्यं किम् असत्यं, कथं वयं वसुधैव कुटुम्बकं भूत्वा अस्मिन् भारतवर्षे एव तिष्ठामः, सर्वमेव अत्र तत् एते प्रतिपादितवन्तः। साधारणम् एकम् उदाहरणं, वसुधैव कुटुम्बकस्य उदाहरणं यथा अस्माकं महादेवः शिवः वर्तते। शिवस्य निकटे पार्वती अपि वर्तते, पुत्रः गणेशः अस्ति, कार्तिकेय उभौ द्वौ पुत्रौ एव। शिवस्य वाहनः अस्ति अस्माकं वृषभः, शक्ति नाम पार्वत्याः वाहनः भवति सिंहः, मूषकः भवति
गणेशस्य, कार्तिकेयस्य भवति मयूरः, शिवस्य गले अस्ति सर्पः। तर्हि सर्प अत्र कार्तिकनिकटे अस्ति मयूर, उभयोर्मध्ये अहिनकुलसम्पर्कः इति वयं कथयामः। वृषभः तदनन्तरम् अस्ति सिंहः पार्वतीनिकटे, उभयोर्मध्ये अपि अहिनकुलसम्पर्कः। सर्प अस्ति, पुनः गणेशनिकटे अपि मूषिकः अस्ति। तर्हि खाद्यखादकभावः सम्बन्धः। तर्हि एते परस्परः विरोधिनः सन्ति, परन्तु एकस्मिन् गृहे कैलासे एव तिष्ठन्ति खलु, न भेदभावः कुत्रापि अस्ति। ए वृषभः, ए सर्पः, ए मूषिकः, क्षुद्रः भवान्, अहं तु ज्येष्ठः, अहं तु श्रेष्ठः अस्मि इति एवम् अस्ति वा? नास्ति। एकस्मिन् गृहे एकत्र एव मिलित्वा सर्वे सङ्घटित भूत्वा एव स्वस्वकार्यमेव सम्पादयन्ति। तथैव अस्माकं भीमराव अम्बेडकर महोदयः वसुधैव कुटुम्बकम् इति तेषां स्वशास्त्रे संविधाने एवं प्रकारेण सर्वेषां कृते समानता अधिकार एव प्रदत्तवन्तः। एवं प्रकारेण मम विषयः अहं प्रतिपादितवान्, विवेकवान् डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इति। तर्हि सर्वमेव ते यत् सत्यं तदेव तेषां पुस्तके एव ते स्थापितवन्तः। तर्हि एवं प्रकारेण मम विषय अत्र समाप्तिर्भवति। मम कृते अवसर दत्तवद्भ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संयोजकमहाभागेभ्यः महोदयेभ्यः धन्यवादान् वितनोमि। तथा मञ्चोपरि विराजमानाः सन्ति अध्यक्षपादाः, तान् अपि धन्यवादान् वितीर्य सञ्चालकमहोदयेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि विस्तरात्। अत्र अन्तिमे एकं वचनमहं कथयामि। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहेब जी ने लिखी। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्याः डॉक्टर तपन कुमार घड़ी महोदयः। बहुमुखी प्रतिभावन्तः भवन्ति अस्माकं भारतरत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदयः। तेषां विषये स्वल्पसमये एव बहु उक्तवन्तः। अनन्तरम् आगच्छन्ति अस्माकं साहित्यविभागस्य आचार्य डॉक्टर ज्ञानरञ्जन पुण्डा महोदयः, तेषां पत्रवाचनं करिष्यन्ति। हरि ओम सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। Respected chairperson ma'am and coordinator of the session and respected professors and my dear brothers and sisters of this university. अद्य त्रिदिवसीया संगोष्ठ्याः विषयः एवं भवति। परमपूज्यस्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदयस्य जन्म जयन्ती उपलक्ष्य अत्र त्रिदिवसीया संगोष्ठी आयोज्यते। अधिकः समयः मया न स्वीक्रियते। छात्राः शिक्षा विभागतः आगत्य कथं कष्टं सोढ्वा अत्र उपविशन्ति इति तदपि अस्माभिः ज्ञायते। अतः अहमपि छात्रः आसं, तदपि अस्माभिः ज्ञायते। 5 निमेषे एव अत्र मया पुटत्रयं कृतम्। अस्य मम भाषणस्य पॉइंट त्रयमेव मया कृतमस्ति। प्रथमः अस्ति गुरुभक्ति, द्वितीयः अस्ति संस्कृतप्रीति, तृतीयः अस्ति धर्मं प्रति अनुरक्ति। कस्य? बाबा साहेब अम्बेडकर महोदयस्य। यत् तदानीं नास्ति, इदानीमपि आवश्यकता भवति। अस्य समाजस्य कृते मम विषयः अयमेव भवति यत् बाबासाहेब अम्बेडकर महोदयस्य इदानीन्तन समाजस्य योगदानमिति।
contribution of the Bhimrao Ambedkar contribution of the society इति एवमस्ति मम विषयः। अतः आदौ तावत् प्रथमः विषयः भवति गुरुभक्ति इति। अस्माभिः ज्ञायते इदानीं किं भवति, पाश्चात्य यद् आगतवान् संस्कृति अस्माकं भारते तद् इदानीं न गतं। किं भवति, धनं दत्वा अस्माभिः इदानीं पाठः पठ्यते। यदा धनम् अस्माभिः दीयते तदानीं गुरुं प्रति अपि स एव भावः आगच्छति, सा एव भावना आगच्छति। किमिति, धनं भारतदेशे प्रायशः शताधिकः किं भवति, धर्मस्य ये भवन्ति परिव्राजकाः भवन्ति। हिंदू भवतु, मुस्लिम भवतु, क्रिश्चियन भवतु, यत्र किमपि किमपि जैन बौद्ध बहवः एवं रूपेण सन्ति। परन्तु कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा निर्णयः कः इति? बहवः सन्ति, हिंदू अस्ति, मुस्लिम अस्ति, क्रिश्चियन अस्ति, जैन अस्ति, बौद्ध अस्ति, सर्वेषां किमपि किमपि एकमेकं मतम् अस्ति। निर्णयः कः अस्ति? निर्णयः किमपि नास्ति। यदि धर्मं प्रति गच्छामः तर्हि निर्णयः किमपि नागच्छति। अहं कथयामि मम मतं श्रेष्ठं, सः कथयति मम मतं श्रेष्ठं, सः कथयति मम मतं श्रेष्ठं। अतः सर्वे यदा यदा किं भवति, वयमेव प्रमुखाः कथयामः तर्हि समाजे को वा प्रधानः इति परिगणयितुं शक्यते अस्माभिः। अतः धर्मं प्रति तैः उक्तं, बाबा साहेब महोदयेन उक्तं, यतोहि यद्यपि अहं हिंदू धर्मे लब्धजन्मोऽस्मि तथापि मरणं मम तस्मिन् धर्मे भवतु इति नेच्छामि इति उक्तवान् आसीत् स च महोदयः। कारणं किमस्ति, कदाचित् समतायाः अभावः, कदाचित् अस्पृश्यतायाः भिन्नता, कदाचित् शिक्षादाने असमता, बहूनि कारणानि स्युः इति अहं चिन्तयामि। तर्हि किं कृतवान्, स च इदानीम् अस्माकं यद् चित्रप्रकारेण बौद्धधर्मं सः स्वीकृतवान् नागपुरे। बौद्धधर्मविषये एकमेव वाक्यम् उक्त्वा अहं विरमामि, समयः मम तथा अधिकः नास्ति। बुद्धः एवं कश्चन महापुरुषः भवति। इदानीमपि बहुषु देशेषु बुद्धस्य पूजा, बुद्धस्य नियमः, बुद्धस्य दर्शनं परिपाल्यते। बुद्धः समता पश्यति, बुद्धः भिन्नतां न पश्यति, बुद्धः सर्वेषु समभावनां आदरं करोति। तदर्थमेव बुद्धस्य पूजा इदानीमपि पाश्चात्यदेशेषु भवति इति मयापि दृष्टं। यदा यदा पाश्चात्यदेशं प्रति अस्माभिः गतम् आसीत्, मया गतम् आसीत्, तदानीं बुद्धस्य तथा आदरः दृष्ट्वा मनः आनन्दायते, यतोहि बुद्धः अस्माकं देशस्य पुत्रः इति। अतः बुद्धस्य यद् भवति आचरणं तद् स्वीकृतम् अस्माकं बाबा साहेब आम्बेडकर महोदयेन। अतः तस्य यद् गुरुभक्ति अस्ति, यद् संस्कृतं प्रीति अस्ति, यद् धर्मस्य अनुरक्ति अस्ति, तद् इदानीन्तन समाजस्य महान् कश्चन आवश्यकता अस्ति इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः डॉक्टर ज्ञानरञ्जन पंडा महोदयः। बाबा साहेब अम्बेडकर महोदयस्य गुरुप्रीति, गुरुभक्ति एवं संस्कृतं प्रति प्रीति इत्यादि विषये उक्तवन्तः। सम्प्रति अहं प्रार्थयामि अस्माकं साहित्यविभागस्य आचार्याः इदं प्रथमतया प्रचलति इति अस्माकं कुलपतिवर्याणां कृते आदौ अहं धन्यवादान् व्याहरामि। यतोहि भगवतः सृष्टौ सर्वेपि समानाः, केचन कारणजन्मानः भवन्ति। तेषां कारणात् अर्थात् तेषां यत् वैभवमस्ति तेन वैभवेन जगतः एवं देशस्य च विशेषप्रतिष्ठापि भवति। तत्र तादृशेषु महापुरुषेषु अन्यतमः भवति अयं भीमराव अम्बेडकर महोदयः। किमर्थं वदामि नाम,
भगवतः नन्दनन्दनस्य सुन्दरवचनामृतमेकमस्ति। तत्र ब्राह्मणे गवियस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इति। के पंडिताः भवन्ति इति चेत् सर्वेषां विषयेपि समत्वभावनां ये स्थापयन्ति ते एव पंडिताः। येषां संकुचितस्वभावः अस्ति सः पंडितः नास्ति। अतः तत्तद्धर्मानुसारं अयं तावत् ये संस्कृतभाषायाः विषये संस्कृतग्रन्थानां विषये एतेषां महापुरुषाणां यः आदरः या प्रीतिः यद्गौरवम् आसीत् तत् अन्यादृशमेव भवति इति वक्तुं शक्यते। यतोहि संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् एते तथा उक्तवन्तः। अतः संस्कृतस्य विषये एतेषां कीदृशं प्रेम अस्ति इति एव मम विषयः भवति। अहम् एकत्र पठितवान्, पूर्वं तावत् 14 घण्टाः कार्यं कुर्वन्तः आसन् इति एकत्र पठितवान्। सर्वकारकार्यालयेषु कार्यालयसमयस्तावत् पूर्वम् एवमासीत्। अधुना अम्बेद्कर् महोदयानाम् आगमनानन्तरमेव 8 घण्टात्मकः कालः निर्दिष्टः इति एकस्मिन् पुस्तके मया पठितमस्ति। नाम सर्वेषां बुद्धिः कियत्पर्यन्तं कार्यं करोति इति कृत्वैव 8 hours एव सर्वत्र पश्यन्तु 8 hours कार्यं करणीयमिति। एतत्कर् महोदयः एवं रूपेण संस्कृतस्य एतादृशं महत्त्वं ददति इति चेत् सर्वे विस्मयावहाः सञ्जाताः। ज्ञातुं तदीयां सुरवाचिनिष्ठां पृष्टस्तदा संसदि सांसदेन गीर्वाणवाण्यैव तदा च भीमः प्रत्यब्रवीत् संस्कृतभाषयैव। एते महाशयाः तेषां कृते संस्कृतेनैव संस्कृतभाषायामेव उत्तरं दत्तवन्तः इति भीमायनमहाकाव्ये लिखितमस्ति। अतः एतादृशः महापुरुषः अस्माकं सर्वदापि पूज्यः एव भवति, तत्र तावत् न कोऽपि संशयः अस्ति। अस्मिन् तावत् गोष्ठीविशेषे मम कृते अवकाशं दत्तवद्भ्यः वेङ्कट्राव् महोदयेभ्यः एवं बलिचक्रवर्तिमहोदयेभ्यः एवम् अन्येभ्यः सर्वेभ्यः अपि मदीयान् तथा धन्यवादान् व्याहृत्य एवम् अध्यक्षायाः कृते एवं कन्वीनर् कृते अपि व्याहृत्य समयाभावात् अहं किञ्चिदेव भाषितवान्। मम आसीत् किन्तु अन्य कार्यान्तरे व्यापृतः अस्मि। अतः अस्याः गोष्ठ्याः एवमेव उत्तरोत्तरं प्रतिवर्षमपि एवमेव भवतु इति वेङ्कटाचलाधीशं सम्प्रार्थ्य विरमामि। नमस्कारः। धन्यवाद आचार्य। मितं च सारं च पचो हि वाग्मिताचार्याणां भाषणम् अतीव मधुरं सारगर्भितं भवति। बाबा साहेब अम्बेद्कर् महोदयानां संस्कृतं प्रति रुचि कथं वर्तते इति उक्तवन्तः, प्रतिपादनं कृतवन्तः च। सम्प्रति डॉक्टर एस.के. मस्तनवल्ली आगच्छतु। 5 निमेषाभ्यन्तरे एव भवतां पत्रवाचनं कुर्वन्तु। Namah Sabhayai. Good evening to all. Present myself. I am working as a guest faculty in the Department of Purana Itihasa in National Sanskrit University, Tirupati. भवन्तः सर्वे संस्कृतं सम्यक् जानन्ति। अहं हिन्दीभाषायामेव अपि भाषणं कर्तुं करिष्यामि। तेलुगु भाषायामपि करिष्यामि, इंग्लिश भाषायामपि करिष्यामि। परन्तु अत्र भवन्तः सर्वे अपि संस्कृतज्ञाः खलु, तस्मात् अहम् I was wrote my research paper on Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar contribution to society. In this topic, Dr. B.R. Ambedkar, father of Indian Constitution. भवन्तः सर्वे जानीयुः, अस्माकं संविधानस्य पिता एव भारतरत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयाः परिगण्यन्ते। एवं he is fought for equality
but Ambedkar is not just about that. जो अंबेडकर महोदयाः ये सन्ति ते सर्वदा अपि समानत्वार्थमेव ते उद्यमं कृतवन्तः। एवं च that makes him visionary beside the fact that he is an ancient of Indian constitution. एवं भारतरत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महाशयाः संविधानस्य निर्माणे शिल्पिः एव परिगणितमासीत्। एवं च Dr. B.R. Ambedkar played key role in establishment of Reserve Bank of India in 1935. Reserve Bank India was conceptualized according to the guidelines presented by Ambedkar to the Hilton Young Commission, also known as Royal Commission on Indian Currency and Finance. एते महाशयाः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदयाः 1935 मध्ये रिजर्व बैंक के लिए जो प्रयास बहुत किए थे, उसी के समय में हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा जो रूपी के प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में बहुत प्रयास करके हमको रिजर्व बैंक स्थापना के लिए भी जो बहुत कार्य रूप से किए थे. So Dr. Ambedkar has very crucial role in RBI formation. इसी के लिए जो अंबेडकर जो महानुभाव ये थे, रिजर्व बैंक इंडिया के निर्माण करने में प्रमुख पात्रता किए गए थे. इसी के बाद द महद सत्याग्रह ऑफ 1927 वाज अंबेडकर्स फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रूसेड. पहले 3 गांधी जी, महात्मा गांधी जी, आप हमारे जाति पिता थे, आप सब जानते थे. उनके ही पहले 3 साल के पहले ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सत्याग्रह का शुरू किए थे, सत्याग्रह का भाग किए थे, आरंभ किए थे. इसी के बाद दी महद सत्याग्रह ऑफ 1947 वाज वन ऑफ द डिफाइनिंग मूवमेंट्स इन अम्बेडकर्स पॉलिटिकल थॉट एंड एक्शन. वहाँ से ही जो अम्बेडकर जी सत्याग्रह आरंभ करने के बाद जो पॉलिटिकल राजनीतिज्ञ में प्रवेश करने के प्रयास किए थे. हेल्ड इन द स्मॉल टाउन ऑफ महद इन महाराष्ट्र, द सत्याग्रह वाज हेल्ड 3 years प्रायर टू गांधी जी दंडी मार्च. जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी दंडी मार्च के 1927 के बिफोर 3 years ही वाज started a satyagraha movement by leading a group of Dalits to drink water from Chavdar Lake in Mahad. जो महानुभाव डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो वही हमारे बिफोर इंडिपेंडेंस अनुसूचित जाति वर्गों के लिए बहुत पानी के लिए, बहुत पीने के लिए वो महर नाम एक तालाब में जो आंदोलन किए थे, उसी के बाद से ही सभी लोगों को स्वेच्छा से ही पानी पीने का हक प्रदान किए थे अंबेडकर जी ने. By leading a group of Dalits to drink water from Chavdar Lake in Mahad, Dr. Ambedkar asserted the right of Dalits to take water from public resources. एवं Dr. B.R. Ambedkar changed the working hours in India from 14 hours to 8 hours. एते महाशयाः अनेक राज्येषु एते कार्यनिरतारः ये आसन्, तेषां कृते कार्य अवधिः 14 घण्टावधिः आसीत्. तस्मिन् समये एते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयाः जो उसी की वो समय में बहुत देश के पर्यटन किए थे, वहाँ जो
परिश्रम का अवधि जो 8 घंटे लगता था, वो देख के यहाँ इसको लेबर एक्ट को 8 घंटे से ही यहाँ काम करने का सुविधा हमको दिए गए थे। अत्र भवन्तः सर्वे जानीयुः, अस्मिन् तिरुपतौ सप्ताधिकविश्वविद्यालयाः सन्ति। एतद् नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, अत्र पार्श्वे SV यूनिवर्सिटी, अनन्तरं वेटनरी यूनिवर्सिटी आसीत्, एवं च अग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी, श्री महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, स्विम्स एते सन्ति। अत्र पार्श्वे श्री महिला विश्वविद्यालयतः आगताः न्यायविभागस्य अध्यक्षा माधुरी परदेसी मैडम एवं च अध्यक्षरूपेण अत्र अस्मिन् संगोष्ठ्यां सभायां सन्ति। एवं कन्वीनर रूपेण प्रदीप कुमार बाग महोदयाः सन्ति। एवं च अस्मिन् 132 अम्बेडकर जयंती महोत्सव संदर्भे 3 दिवसीय अस्मिन् संगोष्ठ्यां ये कार्यनिमग्नाः निरतारः छात्रवात्सलाः अस्माकं प्रोफेसरो वेङ्कटराम महोदयाः, एवं च अस्माकं प्रोफेसर बलिचक्रवर्ती महोदयाः, एवं च नलन महोदयाः, एवं एते सर्वे अपि मिलित्वा अस्मिन्नेव ये भागं गृहीतवन्तः सर्वेषामपि मम हार्दिक धन्यवादान् समर्पयामि। एवं च अत्र अस्मिन्नेव सभायां विशिष्य अस्माकं डॉक्टर ज्ञानरञ्जन पंडा महोदयाः, डॉक्टर एन श्रीनिवासराव महोदयाः, एवं तपन कुमार महोदयाः, एवं डॉक्टर सुधांशु महाभागाः एते सर्वे अपि समागताः। सर्वेषामपि अहं धन्यवादान् वितीर्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः मस्तनवल्ली गारु। सम्प्रति अहं निवेदयामि डॉक्टर सुधांशु शेखर महापात्र महोदयः तेषां पत्रवाचनं कुर्वन्तु इति। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अत्र उपस्थिता विद्वांस छात्रा छात्राश्च। मम लेखस्य विषय भारतरत्नं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरस्य राष्ट्रनिर्माणे योगदानं। भारतरत्नम् इति उपाधिना विभूषिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जीवनस्य 65 वर्षेषु सामाजिकम्, आर्थिकं, राजनैतिकं, शैक्षिकं, धार्मिकं, ऐतिहासिकं, सांस्कृतिकं, साहित्यिकं, औद्योगिकं, संविधानिकम् इत्यादिषु विविधेषु क्षेत्रेषु अनेकानि कर्माणि कृत्वा राष्ट्रनिर्माणे महत्त्वपूर्णं योगदानं दत्तवान्। येषु मुख्यं सामाजिकं, धार्मिकं च योगदानम्। आम्बेडकर महोदयः 1927 तः आरभ्य 1956 पर्यन्तं मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक पाक्षिक पत्रिकाणां सम्पादनं कृत्वा स्वरहीन, शोषित, अशिक्षितानां जनानां जागरणं कृतवान्। स्वस्य दलितवर्ग शिक्षासङ्घस्य माध्यमेन दलितवर्गाणां छात्राणां कृते छात्रावासस्य, रात्रिविद्यालयस्य, पुस्तकालयस्य, शैक्षिक क्रियाकलापस्य च साहाय्येन छात्रान् अध्ययनं कर्तुं तथा च वित्तम् अर्जयितुं समर्थं कृतवान्। 1945 तमे वर्षे स्वस्य जनशिक्षासङ्घस्य माध्यमेन मुम्बईनगरे सिद्धार्थमहाविद्यालय, औरंगाबादनगरे मिलिन्दमहाविद्यालयस्य स्थापितवान्। 1956 तमे वर्षे अक्टोबर मासस्य 14 दिनाङ्के नागपुरे 5 लाख जनैः सह बौद्धधर्मस्य दीक्षां स्वीकृत्य भारते बौद्धधर्मस्य पुनर्स्थापनं कृतवान्। बुद्धः तस्य धर्मश्च द बुद्ध एंड हिज धर्म इति स्वस्य अन्तिमपुस्तकस्य माध्यमेन निरन्तं बुद्धेः मार्गं प्रशस्तवान्। अनन्तरम् आर्थिकं, वित्तीय तथा प्रशासनिकं क्षेत्रे तस्य योगदानम्। भारतदेशे भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्य स्थापना डॉक्टर आम्बेडकर महोदयस्य शोधपत्रं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ओरिजिन एंड रिमेडी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया करेंसी एंड बैंकिंग ग्रंथस्य आधारेण हिल्टन यंग कमीशन इत्यस्य समक्षं तस्य साक्षात् आधारेण च 1935 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तस्य द्वितीय शोधपुस्तक
ब्रिटिश भारते प्रान्तीयवित्तस्य विकास इति आधारेण देशे वित्त आयोगस्य स्थापनाम् अभवत्। कृषिक्षेत्रे सहकारी कृष्या निरंतर विद्युत जलप्रदानेन च उत्पादनवर्धनस्य उपायाः कथिताः। पुनश्च संविधान तथा राष्ट्र निर्माण क्षेत्रे अपि तस्य महान योगदानम् आसीत्। 1955 तमे वर्षे महिला सशक्तीकरणस्य हिंदू संहिता विधेयकं पारितं कर्तुं प्रयासं कृत्वा यदा पारितं न जातं तदा स स्वतंत्र भारतस्य प्रथम विधिमन्त्रिपदात् त्यागपत्रं दत्तवान्। 1955 तमे वर्षे तस्य पुस्तकं थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन प्रकाशनानन्तरम् आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र च लघु प्रबन्धीय राज्येषु पुनर्गठनार्थं प्रस्ताविताः। यत् केषुचित् राज्येषु बहुवर्षाणाम् अनन्तरं साकारं जातम्। निर्वाचन आयोगः, योजना आयोगः, वित्त आयोगः, स्त्री पुरुषाणां कृते समान नागरिक, हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठनं, बृहत् परिधियुक्तानां राज्यानां लघुपरिधीनां संगठनं, राज्यस्य नीति निर्देशक सिद्धान्तः, मौलिक अधिकारः, मानवाधिकारः, निर्वाचन आयुक्तः तथा राजनैतिक संरचनायाः सुदृढीकरणार्थम् एकं सशक्तं सामाजिकं, आर्थिकं, शैक्षणिकं, वैदेशिकनीतिं च कृतवान्। लोकतन्त्रस्य दृढीकरणार्थं राज्यस्य न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका च त्रयः अपि अङ्गाः स्वतन्त्रा पृथक् च कृत्वा समान नागरिक अधिकार अनुसारम् एकस्य व्यक्तिस्य, एकस्य मतस्य, एकस्य मूल्यस्य च सिद्धान्तं स्थापितवान्। एवं प्रकारेण आम्बेडकर महोदयस्य स्वस्य सम्पूर्णजीवनस्य राष्ट्रियहिताय समर्पितवान् इति उक्त्वा अहं विरमामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु शेखर महापात्र। राष्ट्रनिर्माणे डॉक्टर अम्बेडकर महोदयस्य योगदानं विषये प्रतिपादनं कृतवन्तः। सम्प्रति डॉक्टर जी रंगाराव महोदयः तेषां पत्रवाचनं करिष्यन्ति। Okay, sir. Respected chairperson and convener of the afternoon session, and professors and senior faculty members, and my fellow paper presenters, good evening all of you. I feel it is a great privilege to present this paper on this national occasion, national seminar conducted by National Sanskrit University. I am working as a guest faculty in the Department of English, NSC. Now I am going to read my paper on, with the permission of chairperson. The topic is guest faculty. Dr. B.R. Ambedkar's views on Indian education. Dr. B.R. Ambedkar was a well-known teacher himself, and in the same way, he was also much more patriot, scholar, thinker, and founding father of the Indian Constitution. He founded the People's Education Society in Bombay and Aurangabad to educate oppressed people. His lectures and the articles he has written for numerous journals and his work in education institutions all demonstrate his commitment to education. Every educational institution, according to him, ought to be a force for social change. Dr. Ambedkar was adamant that education should be focused by society and used to develop morally upright the people. He envisioned a system of education in India that teaches citizens about human dignity and justice in addition to human rights, awareness and observance. He believed that education may encourage those who are oppressed to fight for justice and an end to the exploitation they have endured for a long time. He saw that the fundamental factor contributing to the backwardness of the people was a lack of education. The goal of primary education, in the words of Dr. B.R. Ambedkar, is to ensure that every kid who joins a primary school leaves it only after he or she has attained literacy and remains literate for the remainder of his life. He distinguished between two uses for knowledge. First, acquiring it to the benefit of others, and second, applying it to one's own improvement. He has also opposed professional education, that means the British education system, which tries to mold workers into clerical cadre or clerical roles. He placed a strong emphasis on secular education for societal liberation.
The only goal of education is to uplift the downtrodden classes, cause for social, economic and political uplift. Dr. Ambedkar's social and ethical philosophy attempted to educate oppressed people about the need to alter their old thought patterns and behavior patterns in order to advance towards freedom and oneness, to instill the ideas of liberty, equality, fraternity, justice, the moral character in boys and girls of religious regions, classes, and castes was the central goal of his education philosophy. With the motto, teach, educate, and organize, he encouraged the oppressed to assimilate with the upper caste in social, economic, political spheres. Additionally, he protected the right to an education for all segments of Indian society by granting certain rights under Articles of 30 and 29 of the Indian Constitution. I know what is the value of education, it is said by Dr. B.R. Ambedkar. Right to education is the fundamental right that every child of India enjoys. Free and compulsory education, the bright right of every child born on the soil of India. It automatically means that there is no need to pay for education. However, the situation has attained with a price. The marginalized lower caste paid the price. Dr. B.R. Ambedkar is the finest example and the survivor of the discriminatory practices of the Indian society. Thank you. Thank you, sir. सम्प्रति डॉक्टर संतोष कुमार जी निवेशद्वयेन पत्रवाचनं करिष्यति. गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्काराः. मम पत्रं तावत् अस्ति आम्बेड्करस्य जीवनवृत्तान्तम् इति. भीमराव रामजी आम्बेड्करः महोदयः एषः भारतीयन्यायशास्त्रज्ञः, अर्थशास्त्रज्ञः, राजनीतिज्ञः, तत्त्वज्ञः तथा समाजसुधारकः बभूव. सः जातिभेदस्य तथा अस्पृश्यभेदस्य विरुद्धं प्रतियोधत्. सः महिलानां श्रमिकानां च अधिकारस्य पुरस्कर्ता आसीत्. बालावस्था मनुष्यस्य जीवितकाले प्रमुखा इति उच्यते. सः कालः मनुष्यस्य भविष्यस्य बीजरूपं. बहूनां महानुभावानां बाल्यजीवनं क्लेशमयं दृश्यते, परन्तु ते सर्वान् क्लेशान् अनुभूय परिहृत्य वा जीवनसङ्ग्रामे यशः प्राप्नुवन्ति. तेषु डॉक्टर आम्बेड्कर महोदयः अपि अन्यतमः. तस्य बाल्यं दुःखमयम् आसीत्, तथापि सः मानवसमुदाये एव उच्चस्थानं प्राप्य धीमान् इति प्रख्यातः सञ्जातः. तस्य आदर्शमयस्य विद्यार्थीजीवनस्य विषयं तथा तस्य अभ्युदये तत् पितुः सततप्रयत्नं च ज्ञातुं प्रयतामहे. डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेड्कर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्रस्य अम्बावाडा इति ग्रामे 1891 तमे वर्षे एप्रिल मासस्य 14 दिनाङ्के अभवत्. भीमस्य पिता रामजी शकपालः, माता च भीमवाई. माता पित्रोः सततपूजा प्रार्थनानां फलम् इव भीमः समजायत. भीमस्य आदर्श व्यक्तित्व निर्माणे तस्य जननी जनकयोः पात्रं महत्वपूर्णम् आसीत्. एतयोः दम्पत्योः पूर्वजाः कबीरपथस्य अनुयायिनः आसन्. एते मांसाहारं मधुपानादिकं च त्यक्तवन्तः आसन्. भीमस्य गृहपरिसरः नैर्मल्येन सरलतया भक्तिभावेन न युक्तः आसीत्. बालकस्य मनसि गृहपरिसरस्य प्रभावः आसीत्. रामजी सकपालः विद्यावान् आसीत्. यद्यपि निर्धनः तथापि सुसंस्कृतः सः अनेकान् आदर्शनियमान् अनुससार. कर्तव्यम् एव दैवम् इति सः चिन्तयमास. अत एव सः रामजी सकपालः कर्तव्यपारायणः, सत्यवादी, उदारः, धर्मरतः च आसीत्. प्रतिदिनं गृहे सर्वैरपि कुटुम्बैः सह देवसङ्कीर्तनं सश्रद्धम् आचचार. एषः धार्मिकगुणः तस्य पुत्रे सुसंस्कारं वर्धयितुं प्रमुखं कारणम् अभवत्. न केवलं देवसङ्कीर्तनं किन्तु रामायण महाभारतकथा श्रवणम् अपि रामजी कारयमास. आध्यात्मिक विद्यया सह
एव सक्पालः पुत्रेभ्यः आङ्ग्लभाषां गणितं च पाठयामास। रामजी सक्पालः समाजसेवा तत्परः आसीत्। फूले महात्मना प्रभावितः सः शोषितबन्धूनां कष्टानि निवारयितुं प्रायतिष्ठ। एवं श्रीमजी पितुः सकाशात् उद्यमशीलताम् अन्याय अत्याचार प्रतिरोध स्वभावं मानसिकस्थैर्यं शोषितेषु अनुरागं च शिशिक्षे। भीमस्य माता अपि सद्गुणोपेता सुसंस्कृता च आसीत्। परन्तु यदा भीमः 6 वर्षीयः तदेव सा दिवङ्गता। एवं च किञ्चित् अन्ततो गत्वा एवं किञ्चित् तत्र पठामि। भारतदेश प्राचीन वाणिज्यम् इति परिशोधनपत्रं समर्प्य MA उपाधिं प्राप। भारतदेशस्य जातीयः आयः चरितात्मकः विश्लेषणात्मकम् अध्ययनम् इति निबन्धनं विरच्य PhD उपाधिं च लेभे अयं महारायः। निम्नवर्गजनानाम् अभ्युन्नतिम् आकाङ्क्षं विशेषकृतिं चक्रे तेषां कृते इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इति संस्थां स्थापयत्। अनन्तरकाले भारतराज्याङ्गरचना संघस्य अध्यक्षः भूत्वा महत् यशः प्राप्तवान् अयं नायकः। पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिवर्गे स्थित्वा हिंदू कोड इति एकां न्यायव्यवस्थां प्रावेशयत्। सः 1916 तमे वर्षे भारतदेशे वर्णव्यवस्था जनानां प्रगतिश्च इत्यस्मिन् विषये शोधनिबन्धं यन्त्रपालजी गोष्ठ्यां समर्प्य सर्वेषां मेधावीनां प्रशंसायाः पत्रम् अभवत्। सः विदेशेषु स्थातुम् अवकाशः विद्यमानेपि हिन्दुसमाजस्य संस्कार आकाङ्क्षतया सह ततः सर्वविधमानवानां सोढुमपि संसिद्धो भूत्वा अम्बेडकरः स्वदेशे एव स्थित्वा निजदेशे भक्तिं प्रदर्श। नागपुर महानगरे एकस्यां बहिरङ्गसभायाम् अम्बेडकरः बौद्धमतं स्वीचकार। यद्यपि सः वैद्यशास्त्रं न पठितवान् तथापि जातिदोष निर्मूलनाय औषधमेकम् अन्विष्टवान्। तच्च जातिव्यवस्थाया निर्मूलनं भवेत् इति। एष एव अस्य आशयः आसीत्। जातिनायकः अम्बेडकरः स्वीकृत्य परिश्रमेण स च महान् जातः। तस्य आशयः आदर्श अवश्य आचरणीयाः अनुसरणीयाश्च इति। एवं मह्यम् अवकाशदत्तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः समर्प्य विरमामि विस्तरात्। शपथति वा? धन्यवाद संतोष गारू। संप्रति डॉक्टर बी चैतन्य गारू निमेषद्वय अभ्यन्तरे भवतां समारीः पठन्तु। मम नाम बी चैतन्यकुमारः। अहम् अस्माकं विश्वविद्यालये धर्मशास्त्रविभागे गेस्ट फैकल्टी रूपेण कुर्वन् अस्मि। अहम् इदानीम् अम्बेड्कर् विषये एकं पत्रं प्रिपरेशन् कुर्वन् अस्मि। अहम् एतद् पत्रं समर्पयामि। एतद् अवकाशं दत्तवतेभ्यः सर्वेषां कृते नमस्कारं कृत्वा विरमामि। धन्यवाद चैतन्य गारू। ముకరన్న ఇప్పుడు అధ్యక్ష భాషణం కోసం నేను డాక్టర్ ఎస్ మాధురి పరదేశి గారికి పిలుస్తున్నాను. Okay, good evening everyone. My due respects to university authorities who has given us wonderful chance to present
and before everyone. So whenever you want to see any kind of sanskara, you have to visit only the Sanskrit University. That's only the thing what I can say. The unity, integrity, and the fraternity, and the brotherhood nature, what you can find. I think this is my second visit when I visited this campus. Such a wonderful atmosphere I can find. This is the real meaning of university, that is Central University. And the second part, what I would like to say is a Sanskrit. If I stay here for 10 more minutes, I'll just forget my mother tongue, which is Telugu. Definitely, that's the beauty of the, what you can say. I can have a goosebumps when you people are talking. Everybody is talking in Sanskrit. Such a nice culture you have. Whether you belongs to any kind of religion or a caste or whatever you have. But here you can see only the nature that non-teaching or a staff or a whoever it may be, everybody speaks only in the language that is only a Sanskrit. That's the beauty what you have. And I can see a number of students, those are from South, North, and everybody. But here, this is the culture where you can find. This is what exactly I feel that Dr. B.R. Ambedkar ji want. Because you can find here number of occasions where you can find. When I want to start my lecture in the beginning, I could not find any student. Or I could not see anybody here. Everybody is busy taking tea over outside and everybody is busy over there. Then I requested Venkat ji, ज़रा स्टूडेंट्स को एक बार बुलाइए, उसके बाद चलेंगे, देखेंगे क्या होगा इधर. So उसके बाद I started giving chance to other speakers to speak. Then I can get one by one. Because this is a platform where teachers wants to express their feelings and they have to give their knowledge to you all people. If you people are not here, what's the use of this seminar? What's the use of this gathering? You know about this great man. You're here just because of him. We are here because of him. Because we are the people, we don't have any kind of education purpose. We don't know what is the meaning of women when we want to study. We don't know where to vote, who we can go for a vote. Or any kind of chance whenever you want to have, you don't have any kind of chance. So, right to education. Give an education life, women education. And at the same time, right to give a speech and freedom. Article 21, Article 32, Article 14. Constitution, the great Bible for Indian Constitution. It's a world Bible, ma. You people, I don't know whether you know it or not. Because I'm a law girl and I just know that how we can just give a particular knowledge. Where I got my education from the beginning, that's I belongs to a community that is SC. And I did my studies and everybody, that is especially from the Brahmin teachers. Such kind of natures which I have, you know. Why? Because my mother is a teacher. When I started taking my knowledge, whenever I'm studying, I used to go to the teachers, those are Brahmins. Why here I'm mentioning is that still I get my higher education, I don't know who is my teacher. I know only he is my teacher, that's all. So I could not find any kind of difference there. I used to eat, I used to get. Once I brought up to went for some kind of jobs, there I came to know there are some kind of differences what you can find. Then I went to my mother and asked, I could not find anything here. Why? Because she said, मैडम जी इंडिया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, जब भी और किधर भी आप जाए ना थोड़ा थोड़ा चेंज तो होता है ना, सो आपको सहना पड़ता है जी, ऐसे बोला मेरे मम्मी ने. So what I would like to say is that wherever you can just go, please give respect to everybody. Respect is the term where it should be gained. Because you all are educated, right? And moreover, you all are from education department. It's my honor to stand before you to speak something about our cultures. So one thing I would like to say is wholesome experiences, what you need to be having is that you are in a place where you can learn number of culture, what we can have it. So this culture is nothing but one kind of a knowledge where you can have a number of occasions. Please give a particular tribute and at the same time knowledge orientation to the world where you want to be. The language what you are learning is nothing but Raj Bhasha or Daiva Bhasha.
Is it not? So, how fortunate you are. Should be very thankful to the central university or a university authorities that such kind of a knowledge what you people are going. When I go out and I speak in Tamil, Telugu or any kind of other languages, nothing special. When you speak in Sanskrit, oh, baat alag hai re. Absolutely, is it not? The way you express yourself, the way you express is absolutely different, is it not? So the beauty behind you is nothing but the learning style what you have from the Central University. This is what exactly I can find, especially here. Here I cannot find any kind of difficulties or any kind of other kind of things what we can. Whenever I visit your teachers or whenever I visit any persons, sir, I want to do this, sir, I want this kind of a things, naturally I'll get very positive answer. Here only I just got an example that some presenters, they want to present. When they're introducing themselves, they said, I am guest faculty so-and-so. Then other side, the other teacher said that don't say guest faculty, say faculty. That is enough. That is enough. No need to get almost, from morning onwards, you're going on getting all kind of things. Acharnalo petali. I think you can understand my Telugu. Yeah, you have to keep in your things. The sweeper where you're going, the tea person who is giving you tea, the canteen boy who is giving the mentality is what you have has to be changed, ma. The caste system or wherever you have any kind of thing, whatever you have, those are the things manam pettukunnam avarni kuda. Is it not? Before here I used to work in Ethiopia for 2 years, Ethiopian University, that is in East Africa. I used to work as an associate professor. You know the country where I worked, I did not choose the place where the USA. I choose the place where it is very, very underdeveloped country. That means in one word I would like to say, it's a 20 years back India, if you want to say that, that's the place which we can call as an Ethiopian country. So there we have around 124 universities we have, but they need only Indian professors. They need only Indian professors to teach them. Okay, so I was selected, I was there, because by blessings of my guru, I was there. So once I went there, I was totally shocked. I don't know where I went, because 20 years back, India ela undo ala undi akkada. I could not find internet, I could not find water, I could not find anything. Everything is very, very limited. But you know, these 2 years, I learned such a nice things which I want to take just only in a 5 seconds I want to say. A big family, a royal family who's taking a particular food or a lunch in a particular restaurant, okay? One beggar will be coming. It's a true thing what is happening. What happened here is, these particular people, the rich people, those are having with the white frocks and all, such a cute girls they used to have. Okay, this beggar used to come there and ask, kuch de do khane ke liye. What we will do as an Indian? Chalo hato idhar se, bas ho gaya. अरे कुछ दे दो उसको जाएगा. ऐसा करता है कि नहीं करता? हम लोग करते हैं नहीं था? Here what happened, you know, my dear girls. This rich person is a billionaire, right? This person gave some food to this cute little girl. Just go and give to that boy, and he will give a hug and come back. What we can learn from there? I thought there is Ambedkar. There is Ambedkar. Definitely there is an Ambedkar. Because what we have to learn, that's enough, no? What we can just have certain kind of these things. So our surroundings make us to learn so many things of, you can say kindness is what you can have. So these are certain kind of the things. When I want to remit my salary in my bank after every month to India, where I used to work, then one beggar used to come and ask every Indian, give me some amount, that currency will be called as a bir. So they used to ask only, give me some bir, I want to have. Every month we used to get that trouble. But you know, the same time, the another beggar comes to this boy or this beggar, says, please don't irritate them. They are Indians. They came from such a long place. They left their families and they come here to give us education to a country, to us. So please, if they have any money, they will give you. Please don't irritate them. And the same thing what he has to do is to have bun his hand. He is to give half piece to him,
and they will be moving. See the nature, what we can learn from them. Such kind of natures we have to learn from, such kind of. There is no water there. If you get off internet, we don't know when we will get it. So such kind of, but always I can find in them is they are very smiley people. They are very confident, they are very friendly. These are the things. I was there only for the 2 years. Next day itself, those who went with me, all the guys and whoever come there, they are all back within 1 month. 1 month they came, अरे पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कैसे लेंगे, नहीं हमको डॉलर्स नहीं चाहिए, बस चले इंडिया में जाके कुछ ना कुछ तो खा के रहेंगे, बस कुछ नहीं होगा उधर. 2 years I was there just because of their love and affection. See the beauty where we can have is. That's the place where you could not find anything there. So untouchability or wherever we can have freedom, liberty, religious orientations. There I can find Orthodox Christians. There I can find some kind of persons, those that belongs to the Muslims. You know, African people, how they look? How they look? They look very strong and tall. See my height? Such kind of beautiful people, they know how to humble people, they have to respect people, the way they're receiving, that is enough. From morning onwards, we are going on listening about Ambedkar ye kiya, Ambedkar wo kiya. Aap log kya kar rahe hain? What we are doing, that is absolutely what we are having. Of course, we Indians are very, very superstitious and we are very much attached to each and every person. Almost we have. What kind of respect? Respect to baat chodo. How you are behaving, how you are treating other person. When you have a sweeper in your just room where she is sweeping, did you say hello or kaise hai tum? Sirf ek bar. Did you ask her any time? That is enough, ma. No need to give money, no need to give clothes, no need to give anything. You are just oka palakarimpu chalu manaki. Do you have that feeling? Or the lady who is working in your hostels, or the person who is just helping, that is absolutely because you are educated. You are educated. When you are educated, your thought has to be in a particular way, in a brilliant way. No need to wear 2,500 rupees saree. 350 saree is also enough. Just to show how you have to be. It doesn't mean you have to look and good. That is enough, ma. No need to have that, all those things. The way you have. Of course, you will be a brilliant learner. There may be a slow learner in your class, is it not? Did you give any knowledge to her? Did you give any, you don't know, no? Just let me teach like that. Did you have that? So these are certain kind of things. What kind of Guru Bhakti you are towing to your teachers? How much comments we will do all the time? Of course, it is your right. I don't deny. At the same time, what kind of respect you have? These are all the qualities what we have to be in your lifestyle. And at the same time, if you want to talk about the religion, we are living in a secular state. We have the freedom that we can go for any religion. But here is the platform where I saw the people, they are talking about Ambedkar ji. Arey wah, kya baat hai. Sirf ek hi baat. The way they are talking about Ambedkar ji, such a nice things. So these are such are the points where we can learn in a particular way. ఒక వ్యక్తి గురించి మనం మాట్లాడే ముందు, ఆయనకునేటువంటి మంచి విషయాల గురించి మనం మాట్లాడే ముందు, ఆ మంచి విషయాల గురించి ప్రతిసారి ఇన్నిసార్లు పెట్టుకొని 132 సార్లు నుంచి మనం పెట్టుకుంటూనే ఉన్నాం. ఏమన్నా నేర్చుకున్నామా? మనలో ఏమన్నా చేంజ్ వచ్చిందా? Do you find any kind of change? Physically change will be getting, sir. No need to talk about I become fat, you will become fat. That's not an issue. But what kind of change you are expecting you to? That you have to be. A professor, when a student go to the professor and ask, sir, I did my research. I'm going to get awarded, sir. Definitely I'll go to get a job. When a student go to the teacher or a professor and say, and you know the teacher told, this is a real thing which has happened. And the teacher said to that particular student, अरे क्या तुम्हारा PhD हो गया ना, चलो निकलो, वो रिजर्वेशन लोगे ना, वो आके ले जाएगा तुम्हारा जॉब. Is this the way to talk with the students? As a teacher, what you are giving?
girls who are staying in a hostel talking to their parents that, अरे मम्मी मुझे ये रूम में है ना वो कास्ट का भी है और ये कास्ट का भी है, ओके अगले सेमेस्टर को मुझे चेंज करना रूम को. So what you're asking your mother? Then the mother told her, चलो ठीक है, just you stay here for this semester. I'll talk to your university people or to your head of the department to change this room to another room. Please, dear students, we are living in a society, we are studying, right? We are getting a knowledge. We are not animals, right? Animals are having a lot of love with each and everything. We are human beings, every sense is working, and moreover, we can talk. Animals cannot talk. You can see the pets what we have in our home. Unconditional love the pet is going to give. Is it not? Unconditional love. You can see any kind of animal. So more than that, no, we are Bhagavad Swarupa, is it not? When we are Bhagavad Swarupa, ela undali manam. Ela undali. Moreover, we are educated. We are getting an education. We are in a Saraswati Nilaya. Then what we are expecting to do? We are in a Saraswati Nilaya. So what we are happening to do? The quest has to be given. The quest of particular B.R. Ambedkar ji is only that. Morality has to be. What kind of freedom, liberty, untouchability cannot be there? The great Indian constitution which has been given by whom? So everything, please be confident, my dear students, whatever you are learning, wherever you are, please bring others some kind of knowledge you can give. What kind of majority levels you are giving. Everywhere, whenever you are going, you have to be given certain kind of basic knowledge has to be shared to everybody. Whatever you have, that may be in a different kind of language. It may be your mother tongue, it may be your language, or whatever you have. Please share your thoughts, movements, and your goodness to others. If you are ready to do any kind of goodness to anybody, do it. Varna, chhod do. But don't do any kind of bad things. Don't irritate them. Don't judge them. If you're going to judge them, everybody cannot be beautiful, right? Some may be beautiful from inner, some may be from the outsiders, some may be in a different angle. Everybody is unique. Everybody is special. So at the same time, whenever you have, tum kaun re? Who are you to talk about others? You don't have any right to. Can you do this? Of course you can do. Again, can you do that? No? Then how can you judge others? So please, my dear girls, young girls and young boys, thank you very much that you all are here, especially. By the last session, it's almost 6:30, but your patience is 100% worthy enough, and God bless you all for giving this wonderful opportunity. Thank you, one and all. थैंक यू मैम. मैंने मैडम को इससे पहले पूछा कि मैडम और भी 4 आदमी हैं और 4 पत्रवाचक हैं, तो मैडम ने बोला कि उनको पढ़ने दो, बच्चे भी बैठे हैं उधर जिससे सुन रहे हैं, उनको कुछ शिक्षा मिलेगा, इसलिए उनको भी जाना है. फिर भी उनका बहुमूल्य समय हमको दे के हमको अप्यायित किए हैं. इसलिए मैडम, मैं आपको हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारा इस प्रोग्राम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ. Thank you, sir. This is to play Sanmana Karyakramam. Firstly, may I request to Professor Venkatrao garu, Balchakravarti garu, Nallana garini kuda వేదికపైకి వచ్చి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మాధురి గారు, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్, శ్రీ మహిళా యూనివర్సిటీ తిరుపతి, వారిని సన్మానించవలసిందిగా వెంకట్రావు గారిని So girls, felicitate to madam. Education girls, felicitate to madam. Hey. Thank you, madam. Sir.
సార్ హెచ్ఓడి గారు ఉన్నారు కాబట్టి బెదిరిపోతున్నారు. అట్లాగే ఈ సెషన్ కన్వీనర్ ప్రదీప్ గారిని కూడా సన్మానించవలసిగా కోరుతున్నాం. అలాగే పేపర్ ప్రజెంటేషన్ చేసిన వారు కూడా ఒక్కొక్కరు వచ్చి వారి సర్టిఫికేట్ బ్యాగ్స్ను తీసుకోవాల్సినవి కోరుచున్నాం. డాక్టర్ ఎన్వి శ్రీనివాసరావు గారు, వెంకట్రావు గారిని, మేడం గారిని అందించవలసిన కోరుతున్నాం. బలచక్రవర్తి గారు, ప్రదీప్ బాగ్ గారు, నల్లన్న గారు వారికి బ్యాగు సర్టిఫికేట్స్ అందించవలసిన కోరుతున్నాం. డాక్టర్ తపన్ గడాయ్, అంటే డాక్టర్ జ్ఞానంజన్ పాండాజీ, ఫిజికల్ డైరెక్టర్. డాక్టర్ ఎస్కే మస్తాన్ వలి, డాక్టర్ సుధాంశు మహాపాత్ర, సుధాంశు శేఖర్ మహాపాత్ర, చిన్ను చిన్ను డాక్టర్ సంతోష్ మాజీ వస్తారు. డాక్టర్ బి చైతన్య, డాక్టర్ జి రంగారావు గారు, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. సో మేడం గారికి ఇంతసేపు వాళ్ళ టైంని వెచ్చించి ఉన్నందుకు మేడం గారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెబుతూ, అట్లాగే ఈ కార్యక్రమంలో వెంకట్రావు గారు, నల్లన్న గారు, చక్రవర్తి గారు, ప్రదీప్ బాగ్ గారు మరియు అదర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ అందరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మమ కిమార్థం బో టుమారో సెషన్ 9:30.